and have a responsibility in creating and constantly recreating the strength and excellence. One way towards this is discussions through seminars, workshops, conferences, and webinars. Today, we are witnessing one such endeavor through this international webinar on remembering the role of translation in Indian freedom struggle. I, Dr. Seema Sharma, on behalf of Maharaja Ganga Singh University and Central University of Mahendragarh, welcome you to this webinar and thank all the dignitaries and our esteemed guests for their gracious presence. We have with us Professor Rajneesh Kumar Shukla sir, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Varda, as our chief guest. I express my sincere gratitude for him for sparing his precious time for us. Our keynote speaker is Professor Kapil Kumar sir, Chairman, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, a name who needs no introduction. My sincere gratitude to you, sir. We have with us Professor P.K. Dashora sir, ex-Vice Chancellor, University of Kota, a dynamic personality, and Professor Nija Gupta Madam, Vice Chancellor, Sanchi University of Buddhist Indic Studies, as guest of honor. I am grateful to you, sir and madam, for your gracious presence. I wish to express hearty welcome to the delegates from different parts of country and outside country for showing interest in this event. Warm welcome to the faculty members of different universities, colleges, research scholars, and dear students. Translation has helped knit India together as a nation throughout her history. It brought and still brings language closer to one another and introduces to one another diverse modes of imagination and perception and various regional cultures, thus linking lands and communities together. Ideas and concepts like Indian literature, Indian culture, Indian philosophy, and Indian knowledge systems would have been impossible in the absence of translations with their natural integrationist mission. So to throw more light on the topic and introducing the theme of webinar, I now invite Professor S.K. Agrawal sir, Head Department of English, Maharaja Ganga Singh University. Over to you, sir. Thank you so much, Dr. Seema Sharma, the organizing secretary. I can see the brightening face of Professor Rajneesh Shukla, the Honorable Vice Chancellor. Sir, namaskar. Namaskar, sir. Thank you so much for joining us. I can understand your terrible schedule, but despite that, you could keep up your promises. I'm really grateful to you, sir. Nirja Madam, you see, whenever I talk to her, she's ever ready. And very often I take her consent granted. My gratitude to you, ma'am, too. Professor Dashora, in fact, he's like a friend, philosopher, and guide for me. So he has been throughout with me in my academic endeavor. To begin with my thematic note systematically, now I begin my thematic note. Honorable keynote speaker, Professor Kapil Kapoor, Chairperson, Indian Institute of Advanced Studies, Simla, who will be joining us at 1 o'clock in the afternoon. Professor Rajneesh Shukla ji, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya. Guest of honor, Professor Nija Gupta, Vice Chancellor, Raisen University. In fact, I have forgotten the full name of the university, so I am cutting it short, calling it Raisen University. I hope Madam will not mind it. The special guest, Professor P.K. Dashora, former Vice Chancellor, University of Kota, Chairperson and Patron of the webinar, Professor Vinod Kumar Singh, Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Patron of the webinar, Professor Tankeshwar Kumar, Vice Chancellor, Central University of Haryana, Convener of the webinar, Dr. Manoj Kumar, Central University of Haryana, Organizing Secretary of the webinar, Dr. Seema Sharma, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Professor S. T. Sharma, ex-Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Simla,
plenary speakers, distinguished guests, faculty members, research scholars, and students. I welcome you all to this mega event. Professor Kapil Kapoor is the pater familias of English studies, Indian aesthetics, Anuvad and linguistics in this country, and has earned a place of eminence for his work all over the world. I have been a recipient of Professor Rajneesh Shukla's affection, experience, and erudition. You too would when your turn comes to listen to him. Professor Nirja Gupta disarms us with her scholarship, simplicity, conviction, and commitment. Professor P.K. Dashora, the mentorship and scholarship has enabled the country to see several erudite changes which otherwise might not have been possible. Professor Vinod Kumar Singh's self-effacement might not permit me to state what I would, but I would for the sake of record that the event today has been possible due to his love and commitment for academics. I also thank Professor Tankeshwar Kumar for having agreed to organize the event jointly, for which the initiative was taken by Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. I personally owe to Professor S.D. Sharma sir, although he has not joined us right now, he will be joining us during the technical sessions, that is the plenary sessions and the valedictory, but he is again like a friend, philosopher and guide for me, and I personally owe to him a lot. Let me begin with an admittance that I am overwhelmed by your august presence on this occasion. I therefore take this opportunity to express my gratitude to you all. सर्वप्रथम मैं संविधान दिवस पर भी आप सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अमृत महोत्सव के तहत किया जाने वाला विश्वविद्यालय का पहला एकेडमिक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक कार्यक्रम है। इस हेतु भी मैं अमृत महोत्सव के इस उत्सव पर भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। Dear friends, linguistically speaking, India is one of the densest regions in the world. Apart from this linguistic and cultural dividend, India has the longest and the richest tradition of thinking about languages. It says, Jagat Sarvam Sapten Bhaste. We take cognizance of the world through word. Now, seeing the significance of Anuvad, the celebrated phrase be rephrased, and I would say with emphasis, as Jagat Sarvam Anuvaden Bhaste. That is, we take cognizance of the world through Anuvad. Here the term Anuvad, as distinct from translation, deserves attention. Professor Shukla perhaps would agree with me. Translation emphasizes truthfully carried across, and therefore equivalence becomes a major concern in translation. Obsession with equivalence in translation is essentially a Western metaphysical notion. The obsession with the original and equivalence is in some way connected to the theological concept of a paradise that has been lost and has to be regained, the story that is there in the Bible. And therefore, because Bibles are the words of the God, and therefore they need accuracy. And therefore this concept came into the concept of Anuvad also. But then Indian tradition is altogether different. The Bharatiya belief is that human experience is a constant progression of the soul from one birth to the other. The metaphysical obsession about equivalence that haunts translation activity in the West, therefore, is alien to us. Hence, according to Indian concept, there can be no translation that is carrying across, but only an anuvad or a saying after or retell it. Translation as a systematic and political enterprise took off in the colonial period. I am talking about the colonial period now. I would like to quote Karl Marx, what he said about the Dutch colonizers. Karl Marx remarks regarding the Dutch colonizers, and I quote, they were traders, thieves, and translators, is to a good extent applicable to colonization in India as well. Trade was the legal means of appropriating others' wealth, theft an illegal way, and translation a means of amassing intellectual wealth during the colonial period.
And this is how you can equate colonization, the conspiracy that these colonizers did have in the concept of translation. Here I must not forget to make a mention of Indian nationalists aiming at cultural revival to strengthen the nation through Anuvad. I am reminded of the exchange of ideas in Bankim Chand Chatterjee's Anand Math between Chikitsak and Satyananda. Professor Neja Madam would agree with me that this is a prominent discourse in Anand Math that takes place between Chikitsak and Satyanand, and what they say, and their constant plea for redemption of Bharat Mata records a critical moment in India's history. It says, and I quote from the text, "In order to redeem the land of Arya Dharma, it is necessary to disseminate external related knowledge," unquote. It is for the dissemination of external related knowledge that English and European works were translated into English and other languages. This is how the power of British Empire was subverted. But unfortunately, it is really sad that we could not learn a lesson even from our predecessors. And our Department of English and Foreign Languages continue to be colonial in their character. I would expect Professor Shukla to throw light on it. Dear friends, India is a translating consciousness, and I put this, and I underline this phrase, India's is a translating consciousness. By translating our works of literature and knowledge into English, we prove to the world that the colonizer is in no way superior to us, as we too have a long history of great cultural heritage. The British had translated from India only what suited their taste and thus served their interest. But now the empire is writing back. And I say it with emphasis that now the empire is writing back, telling them what they have to read to understand our peoples and cultures, thus changing their old Orientalist conceptions of India. The British termed all those devices, patterns, and objects as orthodox or hackneyed, for which their poor language had no word. I call English a poor language. I call European languages poor languages, and I would like to illustrate these with certain example. The whole Indian philosophy came under a severe attack because of this poverty. The concept of dharam parayanta, patni vrata, pativrata were rejected as orthodox or as devices of subjugation vis-a-vis domination, etc. Even the Indian races, race patterns, and kinship relationships came under a severe jolt, for they proved the rich repository of Indian languages. Ironically, the Indian languages, which have 10 times more words, were found inefficient and scarce in transacting the official and business works, and therefore were rejected. I would like to give one example about the prosperity of Indian languages. I did have a chance to translate the Marwadi dictionary into English. And I tell you, only the Marwadi language, that is supposed to be one of the dialects of Rajasthani, has 10 times more words than that of English. But the English, the British rejected them because they did have a conspiracy. And this conspiracy needs to be exposed. One example is that of Marwadi language. I thank and congratulate Professor N.K. Pandey, who would be joining us in the plenary session from University of Rajasthan, Jaipur, for the enterprise he undertook and the opportunity he provided me to get acquainted with the rich repository of Marwadi. This Marwadi Hindi-English dictionary has been published now. Translation was not merely a literary exercise. It helped the building of a nation. Even Utsavas were translated, and as a result came into being the Shivaji Utsav and Ganesh Utsava, etc. Now, in the context of India, Anuvad was used in a comprehensive sense. Even it is simply because of the integrationist approach, as the organizer rightly said, organizing secretary, approach of Indian translation, that the concept
such as Indian literature, Indian culture, Indian philosophy, Indian aesthetics, Indian knowledge system, Dalit literature, tribal studies have become possible. It is Anuvad that has knit India together. It democratized and helped bring marginalized to the center. Now the questions which the webinar intends to deal with are: doesn't the translation studies demand the reconsideration of disciplinary domain, which after having witnessed a linguistic and cultural turn, witnesses a technological turn now? Isn't equivalence with rasa, that is rupa and swarupa, more appropriate rather than literal fidelity? And what were our freedom fighters as translators aiming at? Can't we see the skewed power dynamics between English and Indian languages and the change that the NEP 2020 heralds in this direction? How the translators during the independence overcame the perils of cross-cultural exchange. Don't we need to change the dynamics and parameters of English vis-a-vis foreign language studies in this country, in the post-independence India? Don't we need to reassess the voluminous creations of the books of history which were written during the colonial period and are still written, which are primarily based on the foreigner's translation model? Have Indian and foreign writers of history succeeded in depicting what India really constitutes? I hope that these and many more questions will be taken up and discussed in the coming 2 days conference, online webinar. I look forward to opening up of new avenues of Anuvad, which has knit the nation together in the coming 2 days. Once again, I thank you one and all, and once again I express my gratitude to Professor Shukla, to Professor Nirja, to Professor Dashora, and all the other delegates, plenary speakers who have been with us in this inaugural session. Thank you so much. Thank you, sir. Very rightly pointed out, translation plays a role in extending the scope of language and reframing the boundaries of the sable. New terms and coinages necessitated by translation create new vocabulary and contribute to greater expressibility. One thus learns not to understand foreign literature and philosophy through the mother tongue, but also speak about modern knowledge from quantum physics to nanotechnology and computer science to molecular biology in the regional language. It strengthens democracy by establishing equality among different languages and questioning the hegemony of some of the others, as it proves that the ideas and experiences can be expressed in all languages and they are exchangeable in spite of their uniqueness. Our guest of honor, Professor Padmendra Dashora sir, has joined, and I can see him. He is ex-Vice Chancellor, University of Kota, a man with distinct vision, an idol of knowledge and experience and inspiration for all of us. He was member RPSC from 2008 to 2014 and served as the advisory board of PhD and MSc students in agricultural statistics. A long biodata with several books and research papers, a well-known name in academic circle. Now, I request Professor P.K. Dashora sir to express his views on the topic. Professor P.K. Dashora sir. Am I audible? Yes, sir. Namaskar, आप सभी को. Sir, good morning. Good morning. Good morning. It's really a great pleasure to be a part of international webinar being organized by Department of English and Foreign Languages, Central University of Haryana, Mahendragarh, coupled with Maharaja Ganga Singh University of Bikaner. In the webinar inaugural session present, Professor V.K. Singh, Professor S.K. Agrawal, Professor Nirja Gupta, Professor Rajneesh Shukla,
Professor Kapil Kapoor, and more than the participants, friends. At the outset, I would say that it is a very pertinent topic, and the topic has been restricted to remembering the role of translation in the Indian freedom struggle. I have two comments at the outset. One is Indian freedom struggle is a result of n number of factors. Translation is one of them. Moreover, translation is not only contributed to Indian freedom struggle, but translation has been contributing in everyone's life, everywhere in this world. So I think that restricting ourselves, translation and Indian freedom struggle as if translation only is responsible for success or attempts of Indian freedom struggle, I would differ here. However, I remember one saying from Rigved. Everyone knows that it is ano badra katavo yantu vishwata. हमारे सभी के लिए सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आए. Let noble thoughts come from all directions to us. Friends, how can noble thoughts come to us from all directions when in India itself we have, 22 languages, about 2,000 dialects? How can noble thoughts come from all directions? It is just understanding, making efforts to understand the views of others, the saying of others, the writings of others, whatever has been written in scriptures, in books, whatever has been narrated in anecdotes, in different languages, in different dialects. And for this, in order to, I think that know, understand, and benefit from varied ideas of learned people, of experienced people, and gain from their experiences, from their learnings, we need to interact, we need to read, we need to understand, we need to question. Scholars from different parts of world, not only India. As I just mentioned that we have 22 languages, about 2,000 dialects. And freedom struggle was participated by pan-India. Everyone, not only present India, but from Pakistan and Bangladesh also. Freedom struggle was fought by people from foreign countries also, for their own freedom of their own countries. And they contributed for the freedom of our nation also. It just cannot be just a result of effort of a singular language, idea of a singular person, or contribution by a small group of people. Friends, language is a means of communication, and perhaps we all know that even before the language was evolved, communication was there.
So perhaps for communication, language is a help. It is not a must. And when it is not a must, then how and why we restrict ourselves to one language, or we study the translation of particular language in particular language. Friends, translation is a very generalized term. Very generalized term. In different languages, it has different connotations, perhaps. As Professor Agrawal has rightly pointed out right here, that anuvad and translation can be viewed in two different ways, distinctly two different ways. And the translation can be a verbatim translation, a translation of ideas, translation of feelings. In Hindi, we say Shabdanuvad, Bhavanuvad, Sankhyanuvad, and there are many categories of this translation and anuvad itself. But translation, perhaps we may not restrict ourselves to the translation work being done by some scholars and published. Rather, the facial movements studied and message gained, is it not a translation? Rather, just intonation of or the accent of a person for conveying something and understanding it differently is not a translation. In Hindi, we say that Abhida, Vyanjana, Lakshana. And when a person speaks in Lakshana, the listener or reader takes some different meaning of it. But verbatim we transfer it, it has a different meaning. When somebody speaks in Lakshana, it has a different meaning. But still, verbatim translation will go in a different way. And translation itself perhaps cannot create history, but in the creation of history or in the history, translation work has got a very important role. As again Professor Agrawal has mentioned that translation helped in creating history. He has just quoted the example of Anandamath. Certainly, Anandamath, the conversation between two characters, as he mentioned, played a vital role in conveying the message to the masses. But that vital role may not be, and we say just we go by verbatim translation of the expressions, and if we do not understand it in different languages and different connotations. Very important thing I would like to make it that translation is one activity, inter alia many activities for transforming the society. Translation helps. But the alone translation can transform the society, I disagree here. For the transformation of society, there are very different activities, or even a set of some activities operating in a particular person or a particular mass may not be feasible for another group or another mass or another person. So individually or in some individual groups, factors affecting may be different. But still, translation is one of them which is essentially present in all sets. Maybe translation is in some
A form or B form or C form, but translation is inevitable. We know that India is, when we are talking of the freedom struggle of India, India is a multilingual country. Every language of India has got something or other to be conveyed to the society, to the human being, not only to a limited group. But that expressed in a particular language, how does it reaches to the another corner of our nation where some other language is being spoken, whether some other language is being understood, whether words have different meanings, then certainly the Bhavanuvad, what message we want to convey, what ideas you want to convey, that is more important. Our published documents and scriptures, they are, we can say that geoculturally they can be different. But still, as regards basic human values are concerned, they coincide at the same point. And that human values include the independence of a person, independence of a group of person, and independent of a group of persons similarly living in a geocultural society. India is a geocultural unit. And that geocultural unit has a different notion of life, a different purpose of life, being expressed in different languages. Friends, India, right since the ancient history, we can point out, has been educating, pleading, advocating, and living independent life. It's a matter of history that we can discuss it separately someday else. But I feel that all Rajas and kings, they have a limited role to play in everyone's day-to-day life, because independence was imbibed in everyone's life. Friends, this independence movement, when we look at from different points of view, where from we should start it? 1857 or still before? 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बीज तो बहुत पहले पड़ गए थे। और भारत में जब चाहे शक हो, हूण हो, maybe Mughals, maybe Turks, whoever came here, the Indian people, the Indian masses, always fought for the independence. Maybe they are living miles apart. When Babur came, Maharana Sangha fought against Babur. He helped Ibrahim Lodi. Because Babur came as an invader. Ibrahim Lodi was Indian at that time, though his ancestors were also invaders. So it is a very complex phenomenon, in my opinion. Independence movement is a very complex phenomenon. Where from we started? 1857 की क्रांति के बारे में जब हम बात करते हैं, we refer to Mangal Pandey, who he was, whom for he was striving for independence. He was just
not fighting, or he had no fire in his heart only for a limited group of people, but against all English people. Maybe they are at Kashmir or maybe they are at the Kanyakumari. And his fire awakened all people in India. Savarkar, he wrote his famous book, Indian War of Independence, on War of Independence in 1857. He wrote it in Marathi. Marathi में लिखी हुई पुस्तक, the book written in Marathi was translated in many other languages. First edition was in Marathi, second edition was published by Lala Hardayal in America by Gadar Party. Third edition was published by Bhagat Singh. Fourth edition was published by Subhash Chandra Bose in different languages. And when we just make an effort to go through these different editions in different languages, perhaps they are not verbatim translations. Though right from our early school age, we have been trained and asked that translation should be exactly verbatim. But as we advance, we understand the meaning of translation and we know the limitations of translation. Sometimes, friends, translation itself is, translated work is itself is more powerful than the original one, because of the beauty of the language, because of the beauty of the translation work, because of the experiences which has been covered by translator in the selection of words. And translation work becomes more important than the original work. I quote you one example. One person from Mewar, Kesar Singh Baharat. Lord Curzon in 1903 invited all princely states for a meeting for a particular purpose. Maharana of Mewar, Fateh Singh Ji, was also invited. In a meeting, in a conference being organized by English people, and Maharana of Mewar visiting and attending it was not cherished by Kesari Singh Barat. Maharana of Mewar left by train from Udaipur for Delhi, and while he was just boarding the train, Kesari Singh Barat handed over him 3 sortas, that is, 13 sortas, that is 13 couplets written in Mewari. They are still relevant and they are known to people. They are known as Chetamni Ka Chuntia. It is in Mewari. But I don't think that I can translate it in even Hindi or in English. I don't have an equivalent word for Chuntia, which is only in Mewari. And on reading his 30 couplets, Maharana Fateh Singh returned in between. The saloon kept empty, saloon of a train. Train reached Delhi and the chair Maharana kept one chair is there in the photograph, and the chair was fixed for the Maharana Fateh Singh. It is language, it is translation. And as on today, when we translate it, we know the beauty of it. A person, a king, a Maharana, he changed his decision of attending the meeting called by
English government. Tatya Tope, he was Marathi. Why he was influenced by Maharana Pratap? Tatya Tope was influenced by Shivaji. I can understand. Shivaji was Maharashtrian. But Pratap was his hero. Pratap was a Mewadi Raja. And Pratap was the hero of Indian freedom struggle all over the nation. Even in Bengal. Whatever Krantikaris or did, they were inspired by Pratap. The translation work of, I give you the translation. What is translation? I give you another example because it just come to me. Rabindranath Tagore has written Gitanjali in Bangla. He himself transcreated it in Hindi. Sorry, in English. The people or the scholars didn't appreciate it. There are many examples. In Sharad, Tagore, Arvind Dev, they wrote in different languages. Their work was translated in different language and it was disseminated throughout the nation, which ignited the fire of independence in the hearts of millions and millions of people. This translation work. Bhagat Singh started, we say that Bhagat Singh studied Lenin and he fought for the Indian independence. It was not written, Lenin was not available in Punjabi, but he translated. He understood it for India. The French Revolution, the Indian freedom struggle has an impact of French Revolution. That French Revolution, it was not available in Hindi or in English or in the Indian language. But the masses of French Revolution was received by Indian people, Indian masses, Indian Krantikaris. It was a translation only. So translation in itself, we cannot say that it has nothing less important. It has played a vital role. The French Revolution was influenced by Rousseau. The Chinese Revolution was influenced by Marx. And even Indian freedom struggle was influenced by Vivekananda. Vivekananda's famous speech of Chicago, still it is being remembered. It is being quoted. So can we say that translation, it is only an activity, translation, it has just verbatim translation is there. As I mentioned that translation, it can have many other dimensions also. Even without using language, the translation we get translation of expressions. We understand it. We get the translation of body language. We understand it. We cannot ignore it. It is really important to understand the translation and define it in different ways. As in today, largely people just understand that translation only a verbatim translation or translation of the meaning we want to say, expressions we want to convey. But translation has to be addressed in translation in different ways. And I would again reiterate and quote Professor Agrawal that Anuvad is different than translation. Translation
has a pivotal role in creating and making history. And Indian freedom struggle is a history. The Indian freedom struggle is not only history, it is our present also. It's our present is the result of Indian freedom struggle. And our future of India, future of Indian citizens will be governed by, will be inspired by, will be taking energy from the Indian freedom struggle. So whatever work, whatever ideas, whatever feelings, maybe from one state, maybe from one language, maybe from one nation, which came to the hearts of people, minds of people, is a form of translation. Inter alia, there are many other components, there are many other factors. But certainly, translation itself is one important factor which we cannot ignore. And we have to give due importance, due credit to it also. I express my heartiest thanks to the organizers, and I understand that all the organizers will be happy to see the success of it, and I wish a grand success to the webinar. I also wish a fruitful outcome of it. I have seen the list of speakers in plenary session and in inaugural session also. I am confident that Ano Badra Kratavo Yantu Vishwata, the noble thoughts will be coming from different speakers in different way, and the net result of that will strengthen our independence, will give nutrition to our thought process. It will enhance our knowledge. It will help us to be a better citizen of India. I, at the last, thank all my friends, colleagues, participants, especially Professor Suresh Agrawal, who has just given me an opportunity to express my views to you all. Friends, I would leave. The reason being, I am in an interview board for the promotion of university teachers. I just took permission from the Honorable Vice Chancellor to attend this webinar and express my views. So Thank you, sir. Thank you so much, sir. My gratitude to you. You spare time. I can understand your very busy schedule, but despite that, you made it to be here. My gratitude and a big thank you to you, sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Very rightly pointed out, translations played a vital role in changing the mentality and culture. Sometimes translation work is more important, and how important the translation is, this discussion will go on further. Thank you very much, sir, once again. In the meantime, our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Professor V.K. Singh sir has joined. I heartily welcome him to this inaugural session of this international webinar. And he is a dynamic personality who has changed the whole structure and the vision of university within 1 year and after his joining. So he will be delivering his lecture afterwards. I welcome you, sir. Once again, my deep gratitude for you. I now invite Professor Mira, Madam, Vice Chancellor, Sanchi University, Buddhist and Indic Studies. She is a dynamic personality, powered with excellence, who knows 9 languages, including Urdu, English, Marathi, Assamese, Russian, Sanskrit, and Prakrit. She has done extensive research in various editions of Ramayana and has to her credit more than 15 books and 100 research papers.
I welcome you, ma'am, for your speech. Professor Neeja Gupta, madam. Namaste. Namaskar, ma'am. Namaskar. Namaskar. Honorable Vice Chancellors, Professor Viren Kumar Singh ji, Professor Rajneesh Kumar Shukla ji, Professor Tankeshwar Kumar ji, Honorable Dashora sir, a plethora of this galaxy, and very, very honorable keynote speaker, Adarniya Professor Kapil Kumar ji, Kapil Kapoor sir, respected my friend Professor Agrawal, and the galaxy of participants. First of all, from bottom of my heart, I extend my thankfulness for including me in this wonderful, wonderful seminar. This conference has set the required, filling up of the gap of the discourses when we discuss and we introspect the reasons what increased the spirit of nationalism during our freedom struggle. So when I was thinking about the topic, it's just mind-boggling. What a topic, what a span, what a scope to be talked about. And we fear what would be the contours that might be missed during these discourses. It has so many layers. There is the dating cannot be explained here. It goes up to prehistoric. When we talk of translation and the role of translation in the freedom struggle, how can we neglect our ancient most texts which were translated in the due courses of time? Whether they were translated due to the dharma, whether they were translated due to their knowledge systems, whether they were translated due to the colonization of the country, the reasons might be multiple. But the literature that was produced in India, whether it was in Sanskrit or Pali or Prakrit, or in many other languages, it has reached to the world in multiple manners. Whether we talk about Al-Baruni, whether we talk about Brahma's fourth Siddhant, Khandak Nayak, Panch Siddhantika, the literature by Varahmihir, or we talk about the other literatures. Why should we restrict ourselves to 18th and 19th century only? So this particular topic itself is so wide, so major, and I'm looking ahead hearing Professor Kapil Kapoor sir on this topic, Professor Rajneesh Shukla ji on this topic, because they are the masters, it is their domain. I'm simply an observer who, like a very, very curious student, wants to know what the role of translation was. And to my mind, I would like to start with the very name of our country, which has undergone so many parivartan, from Jambudweep to Bharatvarsh, from Bharatvarsh to Hindustan to India. And today we are known, I think we are the only country who is known with so many names. And these all happened because of the text which were translated into different connotations, into different genre, into different layers of meanings, different purposes throughout the world. So we are known with those dimensions due to the translations. And I'm not talking only the translation of the text, because a text carries the culture. When the text is translated and it reaches out to different places, the cultures also reach. It's not only reading the text, it's the reading of the cultures. And that's how India is known to many, many, many other geographies of the world. Rather, it has set the tone of many struggles in the world. And I would
like to mention here that we are not talking only about translating the text, we are also talking about translating the art, the music, the cultures, the traditions, and then what they were impacting, how they were setting the notes, how they were setting the moods, how they were setting the tones in other parts of the world where Indians had reached. Because the freedom struggle was not fought only with the given boundaries of India. The freedom struggle was fought at different places. The freedom struggle was fought by the diaspora or by those foreigners who were friendly to the diaspora or to the Indians. And in that particular aspect, we find that somewhere in Fiji, in Mauritius, in East Africa, in South Africa, in European countries, in Canada, in America, everywhere we find all these sprouts of nationalism towards India. What were the major reasons? I have worked a lot on Gandhi. I won't say a lot, but I have worked on Gandhi. And to my mind, Gandhi is the biggest translator. He actually got introduced to the Indian scriptures through translations only. When he was in Britain, he actually read Bhagavad Gita and other scriptures in translations, and then he realized how important it is to read Indian scriptures in original. He himself says, now I want to go back and learn Sanskrit so that I can read Bhagavad Gita in original. So his exposure to Bhagavad Gita, which became the inseparable book of Gandhi, was through translation only. And we know the translation of Bhagavad Gita happened in 1849. And that's how it reached to Britain. And on that, Tennyson wrote after that mood in memoriam, and how it set the tone of spirituality, Nishkam Karma, and many other parts of nuances of Gita which Gandhi had adopted in his life. But when Gandhi was reading Gita, he was also in contact with many other thinkers and writers of the world. They were also writing something very useful. Tolstoy in 1908 has written Letter to a Hindu. This was in response to the Sandas, who was actually talking about a revolutionary fight for freedom. When Tolstoy writes Letter to the Hindu, he was actually advocating the peaceful means. And that letter, when Gandhi, he reads that letter, he translates that into Gujarati. Another very important Gujarati translation Gandhi did was Ruskin's Unto This Last. And the beautiful name, the title what Gandhi gave to Unto This Last was Sarvodaya. And that's how the tone of multi-layered freedom struggle gets set. But the third major translation which has impacted the freedom fight was Gandhi's own translation of Hind Swaraj. He wrote Hind Suraj in Gujarati. That was the word he kept, Suraj. And then from Hind Swaraj, he, on the advice of Tolstoy, when he translated into English, he changed the title, and then the title became Hind Suraj. There were many words which Gandhi could not translate or didn't want to translate. I'm just reading a part of his preface, what he says. He says, I'm quite aware of many imperfections in the original. The English rendering, besides sharing these, must naturally exaggerate them. Owing to my inability to convey the exact meaning of the original, some of the friends who have read the translation have objected that subject matter has been dealt in the form of dialogue. And there were many other words, certain words like that, which Gandhi actually kept as it is. Dhoti, Jat, Ladai, simply. The last chapter of Hind Swaraj, when Gandhi was concluding, he titles in Gujarati as Chutkaro.
But in English, he changed it to conclusion. We all know chutkaro in Hindi would mean chutkara, but Gandhi didn't want to sprout that sort of controversy, so he changed the entire connotation of the word and he simply said conclusion. So translations are not only relevant when the Indian texts were being translated into different languages and they were creating a feeling of nationalism, it was also important and relevant when the Indian minds were reading the text and translations and they were formulating their own nuances, their own mindsets, their own feelings. We all know 1970, the Russian Kranti had a very big impact on the world. How did it reach to the world? We know how Bhagat Singh was reading Marx and other leaders. We know how the binaries were created between the capitalist and the bourgeois class, and the new forms of words were coined. And the Dalit word comes into existence around that time only. The way the missionaries were involved into translations, they were trying to reach out to the Indian minds. At that time, it gave so many ideas to Indians as well, that if they can come to us, why not to reach back? So translation among the scriptures is one thing, but translation reaching as the mind, reaching as a thought, reaching as emotion to the public was another reason. And the major reason was the rise of the middle class. Now the middle class was involved into the national activities. The three major authors which impacted the middle class mind were Tagore, Premchand, and Iqbal. They actually could read out the public feeling. They were generating the literature which was so very matchable to the emotions of the country. And then the translations which were happening at different platform, whether when Premchand was attending the progressive meets, or whether when Iqbal was writing about things in Urdu, where Gandhi says that from Gujarati to Hindi and from Hindi to Hindustani, and that's how the Hindustan word comes in existence, that the country which speaks Hindustani is becoming Hindustan. And that all comes from the language, the transformation of the language. And I said, when the language translates, it doesn't translate only the words, it actually translates the Atma. It's something like Parivartan to Anuvad, from Anuvad to Apbhransh, from Apbhransh to Anudharm, from Anudharm to Dharm, and from Dharm to Atma. You have to undergo so many transformations when we reach out to the impact of translation. So when Anand Math was written, Anand Math was actually the loud voice of those whispers which were happening already in the society. And when Bankim Chand Chatterjee was traveling from Sat Pargana to Calcutta, he saw all those greeneries and fields and all that natural beauty. So he wrote Sujalam Sufalam Malaya Shitalam Shasya Shyamala Mataram. He sent these lines to Rabindranath Tagore and said, I don't know how to start this. And Rabindranath Tagore said, oh, this looks like you are talking about the fields, about that matru, about that mata which gives us jivan. So the words Vande Mataram was given by Tagore to Bankim Chand. What were they translating? Were they translating, giving the only sentences which were written by Bankim Chand Chatterjee, and then it was just the filling of the blanks? Because Aurobindo, when he translated Vande Mataram, he said, oh mother, I bow to you. Now this whole thing is very, very dynamic. It has so much of momentum into it that like a lightning, it would reach to both. It would reach to colonizers as well as it would reach to the people who are suppressed
So as much the suppressed people would absorb and adopt and get motivated, the similar force was over there with the colonizers who would like to, diminish this whole feeling. So when the binaries were created by these literary words, whether it is Vande Mataram, whether it is Hindustan, whether it is Hind Swaraj, when the binaries were created in the general public, translation is an academic work. The academic works don't create revolutions. To create revolution, महाक्रांति के लिए महान आंदोलन चाहिए. आप किताबों में आंदोलन तभी ला सकते हैं जब उसको जन का समर्थन मिले, और जन समर्थन क्रिएट करने में ये जो दो तरह की प्रतिक्रिया हुई, एक जन समाज ने उन शब्दों को अपनाया और उन शब्दों के दमन करने के लिए कॉलोनाइजर्स ने उतना ही जोर लगाया, उसी से जनमानस बना. वो जो मानस बना है वो उसी मनशक्ति से बना जो इन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ने पूरे देश में एक साथ कम्युनिकेशन के, संचार के इतने साधन ना होते हुए भी कुछ शब्दों से जो ज्योति क्रिएट की, जो ऊर्जा क्रिएट की, जो एक रीच आई. और वो रीच सिर्फ भारत भूखंड में नहीं आई, वो सुदूर दक्षिण अफ्रीका में भी दिखती है, आपको गदर क्रांति में कनाडा में भी दिखती है, अमेरिका में भी दिखती है. इसी तरह जय हिंद, कुछ शब्द जो नॉन ट्रांसलेबल रह गए, जिनको हम ट्रांसलेट नहीं करते, जिनको हमने एज सच अडॉप्ट किया, एक्चुअली टू रिटेन दैट इन द ट्रांसलेटेड बुक्स, दे क्रिएटेड द मेजर फॉरवर्ड ऑफ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. When just now sir said that Gitanjali's translation was not accepted. Why it was rejected? Was it rejected because someone in Europe was actually fine-tuning it? Or was it rejected because Gitanjali is not pure words? Gitanjali is Sangeet. Gitanjali is beat. And when you translate Gitanjali into English, you actually miss that Bong Sangeet, Rabindra Sangeet, which actually caught the people's mind. वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद इसीलिए पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसमें उसके संगीत की धुन मिसिंग है. So when we get translated, we don't get translated the literal words. That's why Gandhi says in his preface very honestly that we are here for the summary of the translation. I am not translating my own Gujarati into English. ये भी एक बात देखने की बात है कि गांधी ने सबसे ज्यादा ट्रांसलेशंस 1890 से लेकर 1908 तक पढ़े, और गांधी का जिसको हम कहते हैं मैग्नम ऑप्टा वो आया 1909 में, हिंद स्वराज. तो ट्रांसलेटेड एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या हुआ, वो क्या परमानेंस की तरफ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाला लाजपत राय, और इसी तरह जब गीता का मराठी का जो ट्रांसलेशन है उससे गीता रहस्य जो किताब बनी जिनसे तिलक ने गीता रहस्य लिखा, इन किताबों का भी हम बहुत बड़ा योगदान अपने राष्ट्रीय इसमें फ्रीडम के स्ट्रगल में हम देखते हैं. आई नो I am followed by the major scholars and major speakers. My only take to conclude my part of this speech today is that translation is not a singular activity. Translation is not a periodic activity. Translation is not a language-centric activity. Translation is universal. Translation is omnipresent. Whether we know or we don't know, we keep on translating the abstracts into positives. And that's how Amrita Shergill, when she presents her painting in France, she was translating the psyche of a woman, the same woman like Shakuntala we find in Mahabharata. You know, India has been a place of single mothers.
Whether we talk of Sita, whether we talk of Shakuntala, we talk of Draupadi or Uttara or Subhadra or Hidimba, we have a lineage of single mothers. So when Amrita Shergill reaches out and presents her bold paintings over there, she is also translating that strength of being the boldness, maybe in some other manner. So we need to catch the nuances, we need to catch up and reach out to the genre, and we should not just limit the text to the textual translations. We have to understand the creation of the public mood and that inner strength, the way it has reached to the people. That's how we translate the translation. Once again, thank you so much, Professor Agrawal, to make me a part of this wonderful conference. I'll be gained, I'll be enriched, I'm sure. I'll be joining the other parts, but I'll be switching off the video. Forgive me for that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. It is my pleasure. You accepted our invitation and decided to be amongst us. I can see and understand your very busy and preoccupied schedule, but then you made a promise and kept it. My gratitude to you, ma'am, and I look forward to several learning of items from you in future too. Once again, my gratitude. Now I would like to invite Professor Rajneesh Shukla ji to enlighten us on this. Organizing secretary, sir, will systematically introduce you, and then you are supposed to speak. Thank you, sir. भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा के संवाहक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में तुलनात्मक दर्शन और धर्म के प्रोफेसर तथा माननीय राष्ट्रपति द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कोर्ट के नामांकित सदस्य भी हैं। आप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के वाराणसी क्षेत्र के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से स्नातक और परास्नातक की उपाधि एवं BHU से दर्शन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आपने 7 पुस्तकें लिखी और 100 से ज्यादा शोध पत्र आलेख देश और विदेश के विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने कुल सचिव कार्यकारी परिषद के सदस्य और निदेशक कॉलेज विकास परिषद अन्य कई महत्वपूर्ण पदों में विश्वविद्यालय में आपने सेवाएं दी हैं और आपने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक स्तर के राष्ट्र गौरव नामक एक अनिवार्य कार्यक्रम को तैयार करने में योगदान दिया है। आपका बायोडाटा बहुत लंबा है सर, और यदि मैं ये पढ़ती रही तो पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। मेरा निवेदन सर आपसे संगठन सचिव के कुछ कहने के बाद मैं 2 शब्द प्रोफेसर शुक्ला के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ बैठ कर के मुझे सीखने का मौका मिला है। कुछ विभूतियां ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको बायो प्रोफाइल में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसी ही विभूति, ऐसा ही व्यक्तित्व प्रोफेसर शुक्ला हैं, जिनका बायोडेटा देखेंगे, बायो प्रोफाइल देखेंगे तो लगेगा कि असीमता की एक पराकाष्ठा है, और वो पराकाष्ठा भी ऐसी कि एक आदमी एक पद पर काम करते हुए किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में अपना असीम योगदान करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्तित्व, जैसे मेरे जैसा आदमी, जिसके पास कुछ ज्यादा कार्य होते हैं तो थकान महसूस करता है, पर मैं प्रोफेसर शुक्ला के बारे में बता दूं कि उनके चेहरे पर वही मुस्कान रहती है। यद्यपि वो बहुत बार ऐसा कई बार इरिटेशन होता है जब फोन पर वार्ता नहीं हो पाती है, लेकिन जब काम की बात होती है तो तुरंत मैसेज आ जाता है और कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। सर, आपको पाकर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, यद्यपि मैंने कहा शब्द सीमित हैं, क्योंकि कई बार शब्दों की भी अपनी सीमाएं होती हैं और आपके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, इसलिए शब्दों में बिना बांधे बगैर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें आलोकित करें इस विषय पर। प्रोफेसर शुक्ला। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर।
अनम्यूट करें सर, शुक्ला जी, सर। जी मैं अनम्यूट हो गया। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय संविमर्श में मुझे हिस्सा लेना है, ऐसा निर्देश प्रोफेसर अग्रवाल से जब प्राप्त हुआ तभी से मैं मानसिक रूप से तैयार था। हाँ, वाचिक रूप से थोड़ा कंजूस हूं बोलने में, इसलिए उसको उस रूप में शायद संप्रेषित नहीं कर सका था, और प्रोफेसर अग्रवाल को लगा था कि मैं कुछ टाल मटोल कर रहा हूं, जो संभव नहीं है उनके कहने के बाद। मेरी कृतज्ञता। इस छोटे सी टिप्पणी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं। संविमर्श में उपस्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के माननीय कुलपति प्रोफेसर बीके सिंह जी, कोटा के प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर दसौरा, मेरी अग्रजा, और बहुत कुछ सीखा है हमने जिनसे। बुद्धिस्ट इंडिक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरजा गुप्ता। अभी अंततः वस्तुतः इस सेमिनार को जिससे दिशा प्राप्त होगी वह कीनोट एड्रेस हमको मिलने वाला है। भारतीय विद्या, अनुवाद, भाषा, भाषा विज्ञान, व्याकरण और उसके साथ भारत की शास्त्रीय परंपरा में ज्ञान के विकास के आधुनिक भारत में शलाका पुरुष के रूप में स्वीकृत आचार्य कपिल कपूर जी। मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है कि मैं तो बहुभाषी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर ठीक ठीक ढंग से क्या कह पाऊंगा, थोड़ी कठिनाई है, पर उस कठिनाई से पार पाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अमृत महोत्सव में इस दिशा में सोचा जाना एक महत्वपूर्ण बात तो है, और विशेष करके 21वीं शताब्दी की जो भारत की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से हमें अपने पिछले 250 वर्षों के इतिहास को आजादी के अमृत महोत्सव के व्याज से याद करना महत्वपूर्ण है। और 250 वर्षों के इतिहास को याद करते हैं तो वस्तुतः 250 वर्ष एक विशेष प्रकार के यूरोप के और भारत के इनकाउंटर के वर्ष है। कॉलोनियल अप्रोच रही, हम शासित थे, वो शासक थे। ये एक परिवर्तन 250 वर्षों में आया था, और 250 वर्षों में एक परिवर्तन और आया है। अभी मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया की वो भाषाएं कौन सी हैं जिसमें सर्वाधिक अनुवाद हो रहा है, या जिन भाषाओं से सर्वाधिक अनुवाद हो रहा है। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के रूप में प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं। और मुझे यह जान करके थोड़ा दुख जरूर हुआ कि भारत की कोई भी भाषा पहली 20 भाषाओं में हिस्सा नहीं लेती है, न तो सोर्स लैंग्वेज के रूप में, न तो टारगेट लैंग्वेज के रूप में। तो ये बात जब कही जा रही है कि 250 वर्षों में हमने दुनिया के साथ ज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त इनकाउंटर किया है, समझा है और संप्रेषित किया है, तो आज की स्थिति तो बड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसे में निश्चित रूप से जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत की आजादी के आंदोलन में अनुवाद का क्या प्रभाव रहा है, किस प्रकार से अनुवाद ने इसमें सकारात्मक या नकारात्मक जिस किस्म की भी भूमिका रही है, कॉलोनियल स्टेट को मजबूत करने के लिए, इंपीरियलिज्म को मजबूत करने के लिए कोई भूमिका निभाई हो, या इंपीरियलिज्म को कमजोर करने के लिए कोई भूमिका निभाई हो, भारत में आजादी की प्रेरणा देने की दृष्टि से कोई भूमिका निभाई हो, भारतीय संदर्भों में ज्ञान विज्ञान के नवोन्मेष की दृष्टि से भूमिका निभाई हो, या यूरोप को इमिटेट करने की गति को तेज किया हो, इन सब का मूल्यांकन निश्चित रूप से आवश्यक है। इसलिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1498 और 1498 के बाद भारत को दो अलग अलग हिस्सों में देखने की एक दृष्टि तो बनती है। 1498 वास्को डी गामा का भारत में पहुंचना
वो एक जगह है जहां यूरोप किस रूप में भारत को देख रहा था। इसको पहले समझा जाएगा, तब अनुवाद की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। अनुवाद ने क्या असर डाला है संपूर्ण भारतीय परिदृश्य में, इसको समझा जा सकता है। जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तो वो दो प्रमुख चिट्ठियां लेकर के आया था। एक अरबिक में थी और एक पुर्तगीज में थी। अब पुर्तगीज और अरबिक की इन दोनों चिट्ठियों में, अरबिक में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी एम्परर ऑफ इंडिया के नाम थी, भारत के बादशाह के नाम थी। और पुर्तगीज में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो जॉन एपेस्टल के नाम थी, द लास्ट एपेस्टल। गायब हो गया, खो गया, और जिसकी खोज में यूरोप के विभिन्न देशों ने, विशेष करके पुर्तगीज ने, पूरे यूरोप से पूर्वी हिस्से को खोजने का संकल्प लिया था। उसी को पश्चिम की ओर स्पेन खोज रहा था, पूरब की ओर पुर्तगाल खोज रहा था। लेकिन वो खोज रहे थे, जॉन एपेस्टल को खोज रहे थे मसालों को, खोज रहे थे मसालों को इसलिए कि अरबों ने टर्की पर जब प्रभुत्व स्थापित कर लिया और बाजार पर, यूरोप के बाजारों का जो गेटवे था, उस गेटवे पर उनका नियंत्रण हो गया, यूरोप में चीजें महंगी होने लगी। तो मार्को पोलो के बताए हुए रास्ते के बजाय अब उन्हें एक नए रास्ते की जरूरत थी। अभी तक यूरोप और भारत के बीच का जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार में अरबिक लोग मध्यस्थ की भूमिका में थे, और टर्की वह स्थान था जहां पर दोनों ही देशों के व्यापारी मिला करते थे। तो स्वाभाविक तौर पर उसके बीच संवाद की भाषा अरबिक ज्यादा रही। इसलिए उनको लगता था कि भारत में अरबिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, व्यवहार की जाने वाली भाषा है। भारतीय भाषाओं से ग्रीक में अनुवाद के पुराने उदाहरण प्राप्त होते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध यहां पर मोमेंटरिज्म की बात कर रहे थे, क्षणभंगवाद की बात कर रहे थे, मोमेंटिनेस की वही अवधारणा हेराक्लिटस ग्रीक फिलॉसफी में प्रस्तुत कर रहा था और वही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। पाइथागोरस जिस किस्म की फिलोसफी और जिस किस्म के ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, और जिस प्रकार की जीवन प्रणाली स्थापित कर रहा है अपने सन्यासियों के लिए, वह भारत से कॉपी की हुई, भारत से अनुदित की हुई जीवन प्रणाली है। लेकिन बीच का कालखंड एक ऐसा है जिस कालखंड में अरबों के माध्यम से भारत को जाना जा रहा था, भारत को समझा जा रहा था, भारतीय व्यापार चल रहा था। इसलिए 1498 के पूर्व की परिस्थितियां और 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के बाद की परिस्थितियां या 1757 के बाद की परिस्थितियों का मूल्यांकन करना वस्तुतः भारत के आज की चैलेंजेस को समझने की दृष्टि से आवश्यक है, और मुझे लगता है इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अनुवाद का बहुत महत्व है। आज अनुवाद के बिना दुनिया चल नहीं सकती है, भारत बहुभाषिक देश है, अनुवाद की आवश्यकता, ये चीजें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी राष्ट्र की निर्मिति में, किसी राष्ट्र के जीवन लक्ष्य के निर्धारण में, किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता में भी अनुवाद की भूमिका हो सकती है। इसको किस रूप में समझा जाए, या किसी देश को गुलाम कराने में भी अनुवाद की भूमिका हो सकती है। भाषा इन दृष्टियों से किस प्रकार से भूमिका निर्वहन करती है, इसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूं। वस्तुतः सबसे पहले हम अनुवाद को अपनी भाव और भाषा में देखना चाहते हैं। अनुवाद है क्या? तो जैमिनी इंटरप्रिटेशन का पहला शास्त्र दुनिया में स्थापित करते हैं। ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को अलग नहीं किया जा सकता। ईच एंड एवरी ट्रांसलेशन इज इंटरप्रिटेशन, एंड ईच एंड एवरी इंटरप्रिटेशन विदाउट ट्रांसलेटिंग द आइडियाज इज अ मिस इंटरप्रिटेशन।
तो ट्रांसलेशन की दृष्टि से, इंटरप्रिटेशन की दृष्टि से जो पहला सिद्धांत जैमिनी प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें अनुवाद को परिभाषित करते हैं, ज्ञातस्य कथनम अनुवादम। तो जो ज्ञात है उसको फिर से कह रहे हैं तो अनुवाद है। यानी अनुवाद में भाषा नहीं महत्वपूर्ण होती है, ज्ञात का मैनिफेस्टेशन महत्वपूर्ण होता है। और जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी ज्ञात को तो उसमें इंटरप्रिटेशन आता है। इसको आगे फिर मीमांसा परंपरा में व्याख्यायित करते हुए कहा गया, प्राप्तस्य पुनः कथनम अनुवाद। जो प्राप्त है, विच acquired, which is perceived, which is known, re-uttering, renouncing and reinterpretation of that is अनुवाद। ट्रांसलेशन भी इसी बात को कहता है। ट्रांसलेशन का तात्पर्य जब कल्चरल ट्रांसलेशन में आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ भाषांतर अनुवाद नहीं है, अपितु किस प्रकार से संस्कृतियां एक से दूसरे में संक्रमित होती हुई मानव जीवन को बदलती है, यह बात समझ में आएगी। अनुवृत्तिर अनुवाद, इमिटेट करना, अनुगमन करना, पीछे की ओर चलना अनुवाद है। अब इस दृष्टि से हम 18वीं शताब्दी में अनुवाद की प्रवृत्ति का प्रारंभ तो देख सकते हैं। तब कोई कह सकता है कि जो पहला अनुवाद का उदाहरण प्राप्त होता है भारत के अंदर, प्रिंटिंग पहली अनुवाद की जो होती है, वह पहली अनुवाद की प्रिंटिंग बैप्टिस्ट प्रेस रामपुर से जो न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद हुआ है वह है। और उसके कुछ दिनों बाद फिर ओल्ड टेस्टामेंट का भी अनुवाद हुआ। ये दोनों अनुवाद प्रथमतः संस्कृत में हुए। मैं ये जहां बार बार इस बात को कहूंगा, संस्कृत में करने के पीछे अनुवाद का कारण क्या था। वहां बाइबल उनके सामने महत्वपूर्ण रूप से इस थी कि वह उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस, परिवर्तन ना आए। हर्मेनेटिक की प्रणाली भारतीय भाषाओं में उस प्रकार से लागू भी नहीं हो सकती थी कि वो टेक्स्ट की रक्षा कर सके। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हम बाइबल का ट्रांसलेशन सबसे पहले संस्कृत में करेंगे और उसके बाद से भारतीय भाषाओं में बाइबल के ट्रांसलेशन की परंपरा प्रारंभ हो गई, जिसमें संस्कृत ट्रांसलेशन को भारत के अंदर अनुवाद करते हुए सोर्स लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। एक दूसरी भी अनुवाद की परंपरा दिखाई देती है, वह 1791 में राजकीय संस्कृत पाठशाला, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना के बाद है। और उसमें नोवम ऑर्गेनम का ट्रांसलेशन हुआ, उसमें एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का ट्रांसलेशन हुआ, उसमें द मेथड्स का ट्रांसलेशन हुआ। और इस प्रकार से एक फिलोसॉफिकल बुक्स के भी ट्रांसलेशन का कार्य, यूरोपियन फिलोसफी के, मॉडर्न यूरोपियन फिलोसफी के टेक्स्ट के ट्रांसलेशन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। इसके पीछे को भी ध्यान देना पड़ेगा कि यह क्यों किया जा रहा था। तब तक यूरोपीय दार्शनिक चिंतन की भारतीय समाज में कोई जगह नहीं बन पाई थी और भारतीय दार्शनिक चिंतन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यूरोप का जो दार्शनिक चिंतन है वह कुछ योगदान भी कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट फेज, जिसमें यूरोप के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर के ट्रांसलेशन की बात आती है। यह कहा जा सकता है कि विलियम जोन्स ने जो ट्रांसलेशन किया संस्कृत से, उस ट्रांसलेशन के कारण से अभिज्ञान शाकुंतल का एक ट्रांसलेशन के लिटरेरी ट्रांसलेशन की भी परंपरा पड़ी। परंतु वह अनुवाद भारत को समझने का, भारत को प्रभावित करने का या भारत को परिवर्तित करने का अनुवाद नहीं था।
देखिए लंबा इतिहास उसका भी दिखाई देता है। परंतु बाइबल का संस्कृत में आना 1860 में भारतीय दर्शनों के रेफुटेशन के लिए उसी बैप्टिस्ट प्रेस से षड्दर्शन दर्पण किताब का आना, जिसमें यूरोपियन अप्रोच से भारतीय दर्शनों का खंडन किया गया, रेफुटेशन किया गया, उसका आना यह ट्रांसलेशन की वास्तविक प्रवृत्ति को प्रस्तुत कर रहा है कि किस दिशा में अनुवाद चल रहा था, अनुवाद की योजनाएं क्या थी। और ये योजनाएं वस्तुतः भारतीय समाज की जो दृष्टि थी उसके साथ सातत्य न बिठा करके किस प्रकार से विक्षोभ को उत्पन्न करती है। धीरे धीरे एक अनुवाद की ऐसी परंपरा विकसित हुई थी जिसमें गॉफ इत्यादि ने एक बड़ा अनुवाद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट का किया, ग्रिफिथ ने वाल्मीकि रामायण का किया, और एक अनुवाद की श्रृंखला प्रारंभ हुई। महाभारत के भी बड़े हिस्से के ट्रांसलेशन के प्रयास प्रारंभ हुए। यह वो समय था जब वस्तुतः ब्रिटिशर्स भारत को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। इस समझने को भी दो हिस्सों में बांट करके देखना पड़ेगा। अनुवाद की गति 1835 के बाद तेज होती है, लेकिन भारत को समझने के लिए उन्होंने 1791 से लेकर के 1828 तक विविध प्रकार के यत्न किए। उस यत्न में विलियम विलफोर्स बिल भी है, जिसका भारत में के ज्ञान संसार पर एक बड़ा असर है। और उसमें यह भी है कि किस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को भारत में चलने देना चाहिए कि नहीं, भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार होना चाहिए कि नहीं, भारत में संस्कृत शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे खर्च करने चाहिए कि नहीं, भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए जाने वाले पृष्ठ को भारतीय भाषाएं सिखाने की व्यवस्था क्या होगी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को किस अप्रोच के साथ भारतीय भाषाएं सिखाई जाएंगी। और इन सारे कामों को करने के लिए वस्तुतः भारतीय वाङ्मय का यूरोप की भाषाओं में, विशेषतः अंग्रेजी में अनुवाद अपेक्षित था। यह कार्य प्रारंभ हुआ। अर्थात तो अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को हम देखें, कॉलोनी पीरियड को हम जब देखते हैं, तो एक बात ध्यान में आती है कि ब्रिटिशर्स ने एक प्लान के अंदर अपने चश्मे से भारत को समझा जा सके, भारत को इंटरप्रेट किया जा सके और भारत को यूरोप के बरवक्स कल्चरली ट्रांसलेट किया जा सके, इसके यत्न प्रारंभ किए थे। यह अलग बात है कि इस पूरे यत्न के बीच जब अभिज्ञान शाकुंतल का जर्मन ट्रांसलेशन होता है, गोते जैसा कोई कवि उस पर मोहित हो उठता है। गेटे के बाद एक परंपरा उस दृष्टि से भी भारतीय साहित्य को देखने की विकसित हुई थी। यह अलग बात है कि नोवम ऑर्गेनम का ट्रांसलेशन होता है और भारत के अंदर विज्ञान की एक नई परंपरा का श्री गणेश वैसे ही हो जाता है जैसे यूरोप में हुआ था। और यह भारतीय विज्ञान की परंपरा का निषेध करते हुए नहीं है, जैसा यूरोप में पूर्ववर्ती विज्ञान की परंपराओं का निषेध करते हुए नोवम ऑर्गेनम के उदय के बाद एक नए प्रकार के तर्कशास्त्र का उदय हुआ था। ऐसा नहीं होता है, अपितु भारत के अंदर नोवम ऑर्गेनम के ट्रांसलेशन का असर यह होता है कि भारत में पॉजिटिव साइंसेज के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रति और भारतीय विज्ञान के सिद्धांतों के आलोक में भारत को समझने के यत्न प्रारंभ। दूसरी तरफ इस इनकाउंटर का परिणाम क्या हुआ? जो राज्य ने शिक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में लिया, यह तय कर दिया कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो पढ़ना लिखना है, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं है। ब्रितानी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी सरकार, ये जो वर्नाक्युलर में पढ़े हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़े लिखे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं देगी। और 1835 के बाद एक नए किस्म का संसार विकसित हुआ।
जिनको कल्चरली ट्रांसलेट करने की, यूरोप के बरबक्स बनाने की कोशिश हुई और एक प्रकार की कंडीशनिंग हुई। पश्चिम से आ रहे पूरे ज्ञान का उपयोग एक पश्चिम सा मानस बनाने की दृष्टि से भी हुआ। पर ये दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पहले बैच का स्नातक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो आनंद मठ लिख करके भारत के स्वातंत्र आंदोलन को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तो देते ही हैं, एक भावात्मक आवेग भी देते हैं। और आनंद मठ से प्रभावित होकर के किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन भारत में बढ़ा, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें निश्चित रूप से संघर्ष के, आंदोलन के, स्वतंत्रता प्राप्ति के, प्रतिरोध के जो तरीके प्रस्तुत किए गए हैं वो भारतीय तरीके तो नहीं है, क्योंकि भारत को लंबे समय तक इस प्रकार से तरीके से प्रतिरोध करना आता ही नहीं था। इस्लामिक इन्वेजन के दिनों में भी हमने प्रतिरोध के अपने तरीके लाए, स्थान स्थान पर लड़े। दिल्ली पर कब्जा भले हो गया हो, भारत के जन पर कब्जा नहीं हुआ था, भारत की देशी रियासतों पर कब्जा नहीं हुआ था, भारत की परंपराओं पर कब्जा नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से मनमानस को गुलाम बनाना है। ट्रांसलेशन ने इस दृष्टि से दोनों ही भूमिकाएं निर्मित की। मनमानस को गुलाम बनाने की गति को तेज करने के दिशा में अनुवाद आगे बढ़ा है, तो मनमानस की आजादी का रास्ता कैसे निकलेगा और उसमें दुनिया भर में जो स्वतंत्रता के प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों को किस प्रकार से भारत के स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित किया जा सकता था, इसका भी रास्ता निकला। और ये 19वीं शताब्दी में तेज हुआ है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया वो किताब है जिस किताब ने पहली बार यूरोप के समाज वैज्ञानिक प्रविधि के अंतर्गत भारत को किस प्रकार से गुलामी के दिनों में दारिद्र्य की ओर ढकेला गया है, उसको प्रस्तुत करने वाली किताब है। यह भारत के यथार्थ को, भारत के अर्थशास्त्र को, भारत के समाज शास्त्र को यूरोप के लोगों में एक सोशियोलॉजिकल, सोशल ट्रांसलेशन और लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन दोनों दृष्टियों से समझे जाने की जरूरत है। शायद हिंद स्वराज्य अगर की हम बात कर रहे हैं, अभी नीरजा जी ने उसको सामने रखा था, और वो ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि गांधी ने मूल भी लिखा, गुजराती में लिखा, अपनी मातृभाषा में लिखा, पर फिर गांधी ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसी को अनुवाद करने को नहीं दिया, बहुत सारे उनके सहयोगी थे और गांधी स्वीकार भी करते हैं उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि उस किताब का अनुवाद कर सकते, लेकिन उन्हें यह डर भी है दूसरा अनुवाद करेगा तो अर्थ के संसार से उसका परिचय न होने के कारण से, सिर्फ भाषा के संसार और अर्थों के सतही परिचय के कारण से उस अनुवाद में गलती आएगी। और जिन कारणों को उन्होंने, जिन परिस्थितियों को उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा भी है, और भी कारण थे। गुजराती प्रतिबंधित हुई, अंग्रेजी कभी प्रतिबंधित नहीं हुई। कोई तो बात होगी, दोनों के अर्थ संसार अलग अलग बन रहे होंगे, या अर्थ संसार में अंतर न होने के बाद भी एक अर्थ संसार ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था, एक अर्थ संसार ब्रिटिशर्स को नहीं समझ में आ रहा था, तो स्वराज और सुराज का अर्थ उनको कोई खतरनाक क्रांति जैसी लगी होगी। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के साहित्य के अनुवाद और उस अनुवाद के आधार पर बने हुए बोध, भारतीय साहित्य के अनुवाद और उस अनुवाद के आधार पर बने हुए बोध ने हिंद स्वराज्य की निर्मिति में अभूतपूर्व योगदान किया है। यह गीतांजलि में भी दिखेगा। जब वीर सावरकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ये लिख रहे हैं, तो उन्हें यूरोप की इतिहास लेखन की सभी प्रविधियों का बोध है।
और तब तक वो भी संस्कृत के इतने गंभीर अध्येता नहीं थे कि भारत के इतिहास लेखन की, भारतीय इतिहास लेखन की प्रविधियों का उनको बोध होता। लेकिन जो अनुवाद के अंदर भारतीय इतिहास ग्रंथों से प्राप्त था, उन सबको उन्होंने प्राप्त किया था। उनको समेकित करते हुए भारत के संदर्भ में एक ऐसी किताब लिखी जो भारत के आजादी के आंदोलन के लिए भगवत गीता के बाद सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली, सर्वाधिक प्रेरित करने वाली किताब के रूप में आई। तो दूसरी तरफ इस कल्चरल लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन और क्रॉस कल्चरल इनकाउंटर थ्रू ट्रांसलेशंस को समझने का दूसरा तरीका भी है। हम उसको बियनशील के रास्ते से भी समझेंगे, हम उसे बीसी राय के रास्ते से समझेंगे, हमें उसे जगदीश चंद्र बसु के रास्ते से समझना पड़ेगा। हम सिर्फ गीतांजलि और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर किस प्रकार से भारतीय मनमानस को यूरोप में प्रस्तुत करने का काम अनुवाद से हुआ है, इससे बात समझ में नहीं आएगी। हमें यह समझ में आएगा कि भारत में जो पारंपरिक विज्ञान की दृष्टि थी, भारत में जो पारंपरिक जीवन प्रणाली थी, भारत में पारंपरिक बोध की प्रणाली थी, राजनीति की प्रणाली थी, गणतंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी, इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी, उनको एक तरफ यूरोप को यूरोप के चश्मे से देखने का यत्न विलियम जोन्स से लेकर के और लंबे समय तक, विशेष करके 1920-21 तक एक तरफ राजाश्रय के बीच चलता रहा, दूसरी तरफ से उस राजाश्रय के बीच शिक्षा प्राप्त कर रहे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो अनुवाद उनके द्वारा प्रस्तुत हुआ था उस अनुवाद को सामने रख करके उसको इनकाउंटर करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच गलतियां भी हुई हैं जिन्होंने भारतीय समाज को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने में समस्याएं पैदा की। हमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो फिलोसॉफिकल सिस्टम था, अगर दुनिया में कोई समाज दार्शनिक अवधारणाओं पर जी रहा समाज था, इसलिए ज्ञान का समाज था, तो वो भारतीय समाज था। उसकी दार्शनिक अवधारणाओं को बद्ध अवधारणाएं, क्लोज सिस्टम, बंद अवधारणाएं या मृत अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत करने के यत्न भी ट्रांसलेशन ने किया। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में जो भारतीय वांग्मय का, भारतीय क्लासिकल का अनुवाद हुआ, उस अनुवाद ने बहुत सारी समस्याओं को पैदा किया। उसके अर्थ खोलने की दृष्टि से फिर एक नए किस्म से अनुवाद और इंटरप्रिटेशन का काम प्रारंभ हुआ था। वो विवेकानंद ने वेदांत के नए इंटरप्रिटेशन के साथ प्रस्तुत किया और बाद में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इंडियन क्लासिकल्स के ट्रांसलेशन का एक नया रास्ता दिखाया। और सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में जो प्रकाशित था उनके भी ट्रांसलेशन प्रस्तुत किए उन्होंने। तो दूसरी सब तिलक जैसे लोग दिखाई देते हैं, अरविंद जैसे लोग दिखाई देते हैं जो वेदों को रीइंटरप्रेट करते हैं और कॉलोनियल माइंडसेट को झकझोरने के लिए भारतीय संदर्भों में, यूरोपीय भाषा में किस प्रकार से अनुवाद करके भारत की सभ्यता दृष्टि को और भारत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़े लिखे भारतीय समाज को उसकी जड़ों पर खड़ा किया जा सकता है, उसके मूल अधिष्ठान पर खड़ा किया जा सकता है, इसके यत्न किए। और इसका परिणाम रहा है कि यह प्रयास 1835 से जो प्रारंभ हुआ था भारत को यूरोप के बर्बक संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में बना करके लंबे समय तक गुलाम रखने का, वो बहुत लंबा नहीं चला। 1857 में नए परिवर्तनों के बाद जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ब्रितानी व्यवस्था प्रवेश करती है, उसके बाद से तो कुल 90 वर्ष ही वो चल सके, जिसके आधार पर हजारों हजार वर्ष चलना चाहते थे। इसको समझना, इसमें अनुवादों का दोनों ही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका रहा। अनुवादों का दोनों तरीका क्यों महत्वपूर्ण तरीका रहा है? तो एक तरफ भारत को समझने में उन्होंने जो कोशिशें की और भारत को बदलने के लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी की, वह
कल्चरल ट्रांसलेशन को ठीक ढंग से न समझ पाने के कारण के से हुई उनकी गलतियां भी थी। दूसरी तरफ दुनिया भर में स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहे थे, यूरोप में एकीकरण के और राष्ट्रवाद के विविध प्रारूप चल रहे थे, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म चल रहा था, रिलीजियस नेशनलिज्म चल रहा था, जियोग्राफिकल नेशनलिज्म चल रहा था, जियो कल्चरल नेशनलिज्म चल रहा था, स्टेट नेशन अवधारणा विकसित हो रही थी। ये विविध प्रकार के नेशनलिज्म के जो प्रारूप हो रहे थे, इनके बीच भारत को एक विशिष्ट प्रकार की उनकी जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म थी, जियो कल्चरल नेशनलिज्म थी, जो न तो लैंग्वेज पर आधारित थी, न तो केवल कल्चर पर आधारित थी, न तो केवल ज्योग्राफी पर आधारित थी, न केवल सिर्फ लोकोत्तरता पर आधारित थी, न केवल सिर्फ लौकिकता पर आधारित थी, अपितु इन सबके भी जो श्रेष्ठतम है उनको स्वीकार करने वाली जो प्रणाली थी, उससे भी उस यूरोप के द्वारा हो रहे ट्रांसलेशन से परिचय हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया किस प्रकार से बदल रही है, उपभोक्ता दृष्टियां किस प्रकार से बदल रही हैं, उत्पादन प्रणाली किस प्रकार से बदल रही है, इसकी भी समझ विकसित हुई। और उनके बीच भारत को अपनी जीवन प्रणाली, अपनी दृष्टि, अपना राष्ट्र, अपनी स्वतंत्रता, स्वबोध और गांधी के शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया को त्राण देने वाली सभ्यता हिंदुस्तान से किस प्रकार से दी जा सकती है, इसके प्रस्तुतिकरण में और भारतीय जनमानस के जागरण में ये दोनों ही तरफ से जो अनुवाद हुआ था, सभी प्रकार से जो अनुवाद हुआ था, जो कल्चरल ट्रांसलेशन हुआ था, जो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन हुआ था, इन दोनों ही ट्रांसलेशंस का एक महान योगदान दिखाई देता है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मैं अगर इसका विस्तार करूंगा तो एक तो गलतियां भी करूंगा, दूसरा जो मुझे संकेतित किया था प्रोफेसर अग्रवाल ने कि 1 बजे के करीब प्रोफेसर कपिल कपूर जी हम सबसे जुड़ने वाले हैं, तो उनको भी बाधित करूंगा। इसका ध्यान रखते हुए प्रोफेसर अग्रवाल को और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय में मेरे जैसे व्यक्ति को बात कहने का अवसर दिया और मुख्य अतिथि के रूप में बात करने का अवसर दिया, जो इस पूरी परंपरा के साथ, इस पूरी चिंतन प्रणाली के साथ उस प्रकार से सुसंगत नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए था। इस निवेदन के साथ आप सबको मुझे सुना, अपने इसके लिए धन्यवाद देता हूं और हम सब अब शीघ्र ही प्रोफेसर कपिल कपूर को सुनेंगे। Professor Shukla, thank you so much. My huge gratitude to you. I know your preoccupations, but despite that, you accepted our invitation and decided to be amongst us. Sir, the fundamentals that you have given during the course of the lecture, they will go a long way in setting the tone of this webinar. The fundamentals that you taught us during the whole discourse that was delivered, interpretation of the manifested is translation, has almost become a motto of this conference, sir. We are grateful to you. And the way you talked about the cultural linguistic translation and the translation, cross-cultural translation, sir, I would like to wind up your observations with a discussion that I have come across in Gandhi's book. Gandhi, Mahadev Desai, when he was translating Gandhi's autobiography, he was in a dilemma, which word I should make use of. जब वो मेरे सत्य के साथ प्रयोग, तो उनके साथ डिलेमा ये था, my experiments ऑफ ट्रूथ करूं कि विद ट्रूथ करूं। लेकिन उनको ये ध्यान में था कि अब मैं ऑफ ट्रूथ करता हूं तो सत्य को के साथ परीक्षण हो ही नहीं सकते हैं, सत्य तो अपने आप ही प्रयोगित होता है। इसलिए उन्होंने ग्रामर के साथ एक्यूरेसी नहीं कर जो आप बता रहे थे, अनुवाद के साथ एक्यूरेसी की, जिससे कि भावनात्मक संप्रेषण अनुवाद का समाज तक पहुंच सके। We are really grateful to you, sir, and look forward to many more sessions. I do hope that you will continue to oblige us in the coming sessions also, as you promised. At least in the valedictory session, you would be with us. Thank you so much for that. In fact, we are looking forward to Professor Kapil Kapoor. He was extremely busy in a meeting, and we have not been able to contact him. The moment he joins,
we will start with him. But until then, I would request my Honorable Vice Chancellor, Professor B.K. Singh, to deliver the presidential address. Sir, before he begins, let me say a few words about him. Although his self-effacement will not permit me to say a lot of things about him, but for the sake of record, let me tell you that this whole event would not have been possible if he had not been there, if he did not have love for academics. I am really grateful to him, sir. I am grateful to you, sir, and the department really owe a lot to you and look forward to the development of academics in the university under your dynamic leadership. And now I request your honored self to deliver the presidential address. Sir. प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी, कुलपति रायसेन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी, प्रोफेसर पीके दशोरा जी, पूर्व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, और अभी ऑनलाइन जुड़ने वाले हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो अभी नहीं है, उपस्थित नहीं है, ऑनलाइन सेमिनार के निदेशक एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी, ऑनलाइन वेबिनार की संगठन सचिव डॉक्टर सीमा शर्मा जी, संगोष्ठी में ऑनलाइन भागीदारी कर रहे सभी व्याख्यानकर्ता एवं प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाने की श्रृंखला के क्रम में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं और मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रोफेसर कपिल कपूर, अध्यक्ष उच्च अध्ययन संस्थान, कुलपति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, कुलपति रायसेन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीरजा, पूर्व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पीके दशोरा के प्रति एवं आप सब प्रतिभागियों एवं व्याख्यानकर्ताओं के प्रति कि आपने इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने का निश्चय किया। मैं आभारी हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के साथ सहभागिता करने का निर्णय लिया। यद्यपि विषय की प्रकृति के कारण विदेशी सहभागिता अपेक्षित नहीं रही, तथापि विदेश से भी कुछ महत्वपूर्ण अनुवादकों एवं विद्वानों की सहभागिता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु मैं विदेशी प्रतिभागियों का विशेष रूप से आभारी हूं। मित्रों, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर साहित्य, भाषा एवं विदेशों में बसे भारतीयों के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के में योगदान की चर्चा तो हुई है, किंतु अनुवाद, रूपांतरण, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन का यह पक्ष अछूता ही रहा है। अतः हमने विश्वविद्यालय स्तर पर यह तय किया कि इस अनछुए विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाए। मित्रों, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जैसा कि संगोष्ठी के निदेशक ने भी अपने संबोधन में कहा कि अनुवाद ने भारत को जोड़े रखा है।
ऐसा हमारे दूसरे जो महान विद्वान लोग थे उन्होंने भी ये बातें कई तरीके से इसका स्वरूप रखा। और आज तो प्रोफेसर रजनीश जी ने अनुवाद का वो परिभाषा दी कि मैं तो चूंकि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुआ कि अनुवाद का फैलाव इतना बड़ा हो सकता है। भारत में अनुवाद की यह परंपरा अति प्राचीन है। अनुवाद की इस परंपरा का सटीक उदाहरण रामायण का अनुवादित रूप रामकथा है। भारत में कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और स्थान विशेष के रूप में वहां की भाषा में अपने काव्य को अनुवादित किया। जाने माने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अनुवाद को अपनाया। मुझे स्मरण आता है कि राजस्थान में ऐसे कई विद्वान कवि एवं लेखक हुए हैं जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों के जनमानस में एकता का भाव पैदा करने के लिए एवं स्वाधीनता का अलख जगाए रखने के लिए कार्य किया। राजस्थानी के इस तरह के प्रसिद्ध विद्वान श्री गणेशी लाल व्यास जी हुए हैं। इन लेखकों एवं कवियों पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग अनुवाद के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय विरासत से स्वदेशी एवं विदेशी जनमानस को अवगत कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसी तरह से आदिवासियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को भी अनुवाद से ने ही संपुष्ट किया है। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने असमान लड़ाइयों के अनेक उदाहरणों को दर्ज किया। अत्याचारी ताकत के बल पर विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। इन ताकतों ने स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता एवं संप्रभुत्व को नष्ट करके असंख्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सर्वनाश करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह विस्तारवाद के बुरे डिजाइन एवं आत्म प्रस्तुति की शक्तिशाली भावना के बीच एक युद्ध था। आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकारियों का पुरजोर विरोध किया। अनेक शताब्दियों तथा आदिवासियों को वनों में अलग थलग कर दिया गया, लेकिन आदिवासियों ने आंदोलन जारी रखा। आदिवासियों में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाने का कार्य बिरसा मुंडा, रानी गैदिल्यू, लक्ष्मण नायक, वीर सुरेंद्र भाई, गोविंद गिरी सरीखे महापुरुषों ने किया है। राजस्थान में बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेकर भगत आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद के विचारों का प्रचार भीली में किया गया। गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर विराट सम्मेलन किया। ब्रिटिश सेना द्वारा इस सभा पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1500 से अधिक स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गए थे। इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग भी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, किंतु इतिहास में आज भी इस घटना को सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। आदिवासियों के स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे अनुवाद की अप्रकाट्य शक्ति निहित थी। इतिहास लेखन में रही विसंगतियों को दूर करने का कार्य भी अनुवादकों का ही है। अनुवादक ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जनमानस तक इसे पहुंचाकर आदिवासियों को इतिहास में सम्मानजनक स्थान दिला सकता है और इस तरह से वर्षों से चले आ रहे तथाकथित केंद्र एवं परिधि के लोगों के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं ने अनुवाद के इस महत्व को पहचान कर ही
एक अनुवाद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव शिक्षा नीति में किया है। अनुवाद को एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र के रूप में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहचान मिली है। मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी से ये निवेदन करूंगा कि वे इस तरह के अधिकाधिक अभिनव कार्यों को अमली जामा पहनाए और इसमें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को सम्मिलित करें। मैं इस अवसर पर अनुवाद की बारीकियों, अनुवाद के ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा नहीं करूंगा, किंतु आशा करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इन 2 दिनों में इन विषयों पर भी चर्चा होगी। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि संगोष्ठी में विभिन्न भाषाओं के इतिहास जानकार यथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, संस्कृत आदि के विद्वान भाग ले रहे हैं। यह संगोष्ठी इस तरह से अनुवाद की एक सेतु के रूप में महत्ता सुनिश्चित कर संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की दिशा में कार्य करेगी। इस तरह की पहल निश्चित ही स्वागत एवं अभिनंदनीय है। अंत में एक बार पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your guidance and shouldering this responsibility to us. Sir, you would be glad to know that we have received more than 200 registrations. I request my fellow colleagues to join us for this release of 7 year. We are planning a paper presentation session also. Mail will be dropped to the participants regarding the schedule of paper presentation. So now I request all my fellow colleagues to please join us for this release of 7 year. लो तुम भी लो, ये लो, हो गया। खींचो भाई फोटो, खींच रही है कि नहीं? Thank you. Thank you. Thank you once again. I assure all the participants that we will be dropping mail to them regarding their schedule. I thank you all, my deep gratitude and respect for Honorable Vice Chancellor, sir. Now moving towards our next session, which is plenary. We have 3 plenary speakers. Yes, Professor Kapil Kapoor sir will be joining. The moment he will join, we'll give him entry. And now moving towards our next session, which is in which we have 3 speakers. Professor N.K. Pandey sir from University of Rajasthan, Professor S.K. Sharma sir, Allahabad University, Prayagraj, Professor Attu Mahapatra, Central University of Gujarat, Gandhinagar, and Professor B.L. Badhani sir, Aligarh Muslim University, Aligarh. So, before moving towards this session, I now invite Dr. Pragati Sopti for vote of thanks. On behalf of Department of English, Maharaja Ganga Singh University, and Department of English and Foreign Languages, Central University of Haryana, Mahendragarh, I express my profound gratitude
to all our guests for gracing the inaugural session and sharing with us their erudite views. We are greatly encouraged by your gracious presence and immensely benefited by your enlightening ideas. Thank you all once again, and we look forward to an extremely productive two-day discussion. We'll be starting with our first plenary session. I welcome you all once again, and the moderator of session would be Dr. B.L. Bhadani, former head and professor of history from Aligarh Muslim University. Dr. Bhadani's research areas include medieval history with special emphasis on Indian culture and heritage. He has to his credit over a dozen of books and many articles in journals of repute. We have 3 speakers for the session. Our first esteemed speaker is Professor N.K. Pandey, Dean, Faculty of Arts, University of Rajasthan. Professor Pandey has been Director of Central Hindi Institute, Agra from 2015 to 2020. His areas of interest include Adikalin Hindi Sahitya, oral literature and folk literatures of Northeast India. I request you, sir, to bless us with your views. भाई साहब प्रणाम। ये नमस्कार। राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इंग्लिश डिपार्टमेंट द्वारा ये 2 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है। आज के इस सत्र में उपस्थित प्रोफेसर रतनु महापात्रा जी, प्रोफेसर B.L. बधानी जी, प्रोफेसर मिश्र जी और इन संपूर्ण कार्यक्रमों को देख रहे, सबकी व्यवस्था कर रहे, आयोजन कर रहे प्रोफेसर S.K. अग्रवाल तथा प्रोफेसर सीमा जी, बहुत ही अच्छे विषय पर इन 2 दिनों का सेमिनार आयोजित है। प्रायः सेमिनार के दौरान अनुवाद जैसे विषय पर ध्यान कम जाता है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है, केवल इंग्लिश से हिंदी नहीं, इंग्लिश से समस्त भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में, और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी का अनुवाद। अंग्रेजी का भी जो साहित्य आज हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा अन्य भाषाओं के विद्वानों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा। और इसके अलावा जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत पीछे जाकर पोएटिक्स में प्लेटो और अरस्तु को, वे लोग अंग्रेजी में नहीं लिख रहे थे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर को समृद्ध बनाने में पूरे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य ही नहीं, अंग्रेजी के समस्त विषयों को जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है उसको समृद्ध बनाया और आज भी बना रहे हैं। विज्ञान की जो बेहतरीन पुस्तकें हैं, लॉ की, मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, इंजीनियरिंग की, वे सब ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं लिखी गई है या अमेरिका के लोगों ने उसे नहीं लिखा है। अंग्रेजी बोलने वाले जो 3.5 देश हैं, उन देशों के लोगों ने ही केवल और केवल इंग्लिश को एनरिच, समृद्ध नहीं बनाया है। सारी दुनिया के लेखकों ने अंग्रेजी में लिख लिख करके उस भाषा को समृद्ध बनाया, और उसके कारण सारी दुनिया में एक प्रेशर की, दबाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। और हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आज अनुवाद की बड़ी जरूरत, बड़ी आवश्यकता हमें महसूस होने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बतलाया गया है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। भारत में जिन लोगों ने
इंग्लिश में बड़ा काम किया। विज्ञान और तकनीकी में इंग्लिश में किताबें लिखी। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो आज बड़े नाम दिखलाई पड़ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने हाई स्कूल और 10th तक की शिक्षा अपनी भाषा में पाई थी। बाद में अपनी अंग्रेजी ठीक करके साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, ह्यूमैनिटीज के तमाम विषय और सोशल साइंस की किताबों को इंग्लिश में लिखा। आज मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं वो धर्मपाल की पुस्तक है, और धर्मपाल की पुस्तक 10 भागों में लिखी गई। उन 10 भागों का अनुवाद भारतीय लोगों ने किया। संपादन उसका इंदु मती काट दरे, ये अहमदाबाद में रहती हैं, उन्होंने किया। अ ब्यूटीफुल ट्री जिसकी बहुत चर्चा होती है, उसका अनुवाद पहले गुजराती में फिर हिंदी में हुआ, और उसके अनुवादक हैं रजनीकांत जोशी और कृष्णपाल सिंह भादौरिया। धर्मपाल जी ने अपने जीवन का लंबा समय भारतीय शिक्षा, विशेष करके 18वीं और 19वीं शताब्दी में ढूंढने की कोशिश की। ये 10 वॉल्यूम में 10 भाग मेरे पास है। भारत की शिक्षा को किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। कई बार हमको लगता है कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, शिक्षा, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए होते तो हमको नहीं मिलती, लेकिन यह मिथ्या है। चूंकि हम उसी प्रभाव में पढ़ते और लिखते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वे उस भाव भंगिमा के नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जो उनकी ट्रेनिंग है वो भारत केंद्रित, इंडिया सेंट्रिक जिसको कहते हैं, उस तरह से हुई नहीं। इस कारण से उनके मन में भी यह बसा हुआ है कि अंग्रेज और अंग्रेजी नहीं आई होती तो हम भारतीयों का क्या होता। मुगलों के अंतिम समय में जब बहुत ही देश में उथल पुथल था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी, और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगभग 23% के आसपास थी। शिक्षा का माध्यम निश्चित रूप से अंग्रेजी नहीं थी। अलग अलग प्रांतों में उन प्रांतों की भाषाएं थीं। हिंदी थी विशेष रूप से। आज भी हिंदी भाषी 10 प्रदेश हैं, तो जाहिर है कि हिंदी बड़ी संख्या में रही होगी। संस्कृत माध्यम के विद्यालय बड़ी संख्या में थे, और इन विद्यालयों की संख्या 1757 अंग्रेजों के जमने का समय भारत में हम लेते हैं, और 1947 में वे गए। अंग्रेज भारत आए और भारत में अपना शासन चलाने लगे। तब भारत में 5 लाख, फिर से दूर आता हूं, 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। उस समय देश की आबादी 20 करोड़ से कम थी, और तब म्यांमार, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। 20 करोड़ आबादी के लिए 5 लाख प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। जाहिर है उसे देखते ही अंग्रेजों के होश उड़ गए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है। बिहार, बंगाल में 1 लाख विद्यालय थे। ये सारा का सारा सर्वे धर्मपाल ने किया। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वर्धा आश्रम में रहते थे। भारत आने पर देश भर का भ्रमण करते थे। ब्रिटेन में लंबे समय तक रह करके उन्होंने लिखा, और लिखने का बड़ा कारण यह था कि महात्मा गांधी जी ने अपने किसी व्याख्यान में कहा था कि अंग्रेजों के आने के साथ ही भारतीय शिक्षा का रमणीय वृक्ष समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी को भारतीय शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था के बारे में बहुत गहरी जानकारी थी। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा, और इस बात को ध्यान में रखकर धर्मपाल ने काम करना प्रारंभ किया, और इस काम के परिणाम स्वरूप कुल 10 भागों में उनकी पुस्तकें आईं। 10 भाग, 10 वॉल्यूम है। उनका हिंदी अनुवाद है भारतीय चित्त, मानस एवं काल। 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्र विज्ञान, तंत्र से मतलब जादू टोना नहीं है, यह तंत्र स्किल से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में असहयोग, रमणीय वृक्ष, 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा, यह भाग बहुत चर्चित हुआ। और आज भी जिनको लगता है कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले बंदर और भालू नचाने वाला देश था, उसको रमणीय वृक्ष, ब्यूटीफुल ट्री पढ़ना ही चाहिए। 5वां भाग पंचायत राज एवं भारतीय राजनीतिक तंत्र, भारत में गो हत्या का अंग्रेजी मूल, भारत की लूट एवं बदनामी, गांधी को समझे, भारत की परंपरा एवं भारत का पुनर्बोध। ये 10 वॉल्यूम है, और इस 10 वॉल्यूम के जो स्रोत सामग्री है, जो रेफरेंसेज है, उसका 80 से 90% हिस्सा विदेशी लेखकों से लिया गया है। यानी विदेशी लेखक भारत के बारे में क्या सोचते थे, उनके सर्वे क्या थे, और भारत में किन किन लोगों से वे मिले, इसके साथ ही ये सब करके वे भारत की शिक्षा को किस प्रकार से नष्ट कर देना चाहते थे, योजना पूर्वक नष्ट करना चाहते थे, उस पर पूरा का पूरा ये सर्वे है, और पूरा का पूरा डाटा धर्मपाल ने इकट्ठा किया है और बतलाया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को नष्ट किया, और शिक्षा को नष्ट करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। ये भारत को अंग्रेजी तो पढ़ाना चाहते ही थे, भारत को ईसाई बनाना चाहते थे। इसके साफ साफ संकेत उनके ही रेफरेंसेस से, उनके ही संदर्भों से धर्मपाल ने दिया है। हम में से अधिकांश लोग जो आज भी अंग्रेजी की तरफ इस दृष्टि से लट्टू हैं, मोहित हैं, खींचे जा रहे हैं कि अंग्रेजी तो केवल एक भाषा है। मुझे लगता है कि भारत में अंग्रेजी तो केवल एक भाषा है। इस रूप में न तो अंग्रेजों के समय पढ़ाई गई और न आज पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी पढ़ाते समय हमेशा ही भारतीय भाषाओं को हीनतर बतला करके, कमतर बतला करके
अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उसके पढ़ाने के साथ केवल भाषाओं को ही नहीं बताया जाता, पढ़ाने वाले भारतीय होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी, मंदिर में रोज जाते हुए भी अपनी उपासना पद्धति, अपने संस्कार, उसके विरोध में बोलते हुए भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कारण ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति को लेकर आई। संस्कृति केवल वस्त्र का पहनावा नहीं है, ये तो सभ्यता है। भीतर तक किस प्रकार से वो प्रविष्ट हो गई, हमारे भीतर किस तरह से जड़ें बना ली, इस बात को धर्मपाल ने लिखा और उसके अनुवादकों ने पूरा पूरा ध्यान रखा कि ठीक तरह से अनुवाद किया जाए। जो पहला भाग है उसमें भारतीय चित्त, मानस एवं काल, बिल्कुल संस्कृत की सरल शब्दावली, भारतीय चित्त, मानस और काल। हर देश का अपना एक चित्त होता है, हर देश का अपना एक मानस होता है। यह चित्त और मानस हजारों वर्षों में उस संस्कृति के द्वारा निर्मित होता है। उसमें पहले ही भाग का पहला अध्याय या 20वीं 21वीं शताब्दी है किसकी, इस पर उन्हीं के संदर्भों से चर्चा की गई है। अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, विदेशी दृष्टि से हम भारत को जानने की कोशिश करते हैं। इसकी चर्चा अब होने लगी है कि जब तक संस्कृत महान भाषा है, कालिदास महान है, तुलसीदास महान है, से लेकर योग तक की चर्चा विदेशों से नहीं होती है। हमें नहीं लगता कि भारत में भी कुछ महानता के गुण हैं। यहाँ तक कि गंगा जल की प्रशंसा भी जब विदेशी करेंगे तब हमको लगता है कि गंगा जल कुछ महत्वपूर्ण जल है और पानी से पृथक उसकी सत्ता है। महत्व सही जवाब का नहीं, सही सवाल का है। यह एक अध्याय है। अपने चित्त को समझे बिना भारत का काम नहीं चलेगा, इसकी चर्चा धर्मपाल जी ने की है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता से वंचित होने की चिंता धर्मपाल जी की है। इसके अलावा जारी है गांधी पर नेहरू के हमले, इसको भी समझने की जरूरत है। भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था, भारत का पुनर्निर्माण, हमारे सपनों का भारत, अंग्रेजी शासन और भारतीय तंत्र व्यवस्था, कहाँ है पश्चिमीकरण की जड़ें। इन विषयों पर अंग्रेजी में धर्मपाल ने लिखा और उसका अनुवाद भारत में हुआ है। यह अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं को बल देने वाला अनुवाद है, क्योंकि इससे एक साथ भाषा, इतिहास, संस्कृति, कला, संगीत की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वाभिमान की शिक्षा प्राप्त होती है कि भारतीय स्वाभिमान कितना बड़ा था। धर्मपाल ने अपने खोज के आधार पर लिखा है कि भारत में उच्च शिक्षा के अध्ययन में जो पुस्तकें लाई जाती थी उसमें वेद के अलावा तमाम महाकाव्य हैं, व्याकरण की पुस्तकें, भारत में पर्शियन और अरबी की भी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। और यह शिक्षा ईरान और अरब के देशों की जैसी थी, उनकी पुस्तकों पर भी उन्होंने चर्चा की है। बंगाल और बिहार की तत्कालीन शिक्षा पद्धति का
एडम का जो ब्यौरा है, एडम का ब्यौरा एडम्स रिपोर्ट्स के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस रिपोर्ट को भी उन्होंने अपनी पुस्तक का हिस्सा बनाया है। और रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल 1836 एंड 1838, इस शीर्षक से जो पब्लिश है, उस पूरे के पूरे आंकड़े को उन्होंने प्रस्तुत किया। एडम प्रथम का विवरण, एडम द्वितीय का विवरण, एडम तृतीय का विवरण भी इसमें है। भारत में जो भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, खास करके बंगाल में, उसमें बंगाली, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और ये शिक्षा कक्षा 8 तक इन भाषाओं को की दी जाती थी। साथ साथ उड़िया भी इन प्रदेशों में पढ़ाई जाती थी। विद्यालय शिक्षा के 4 स्तर अंग्रेजों के आने के पहले थे। संस्कृत पाठशालाओं में न्याय शास्त्र, साहित्य, पुराण, वक्तृत्व कला, शब्द शास्त्र, वेदांत, तंत्र विद्या, मीमांसा, आयुर्वेद पढ़ाए जाते थे। और आयुर्वेद के कारण भारत सुरक्षित और स्वास्थ्य की दृष्टि से संरक्षित था। अंग्रेजों ने कोशिश की कि भारत में जो कुशल कारीगर हैं, उनका राजस्व घटा दिया जाए। भारतीय लोगों के हुनर में, भारतीय लोगों के कौशल में कैसे कमी आवे, इसकी पूरी कोशिश अंग्रेजों ने की। चेन्नई के कलेक्टर ने तो लिखा कि ऐसी स्थिति बना दी गई है कि चेन्नई के लोग संघर्ष की स्थिति में नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से वे बदतर स्थिति में जी रहे हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज भारत में शिक्षा देना चाहते थे? बस तो उतनी सी शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनका राजकाज ठीक से चल सके। धनपाल जी ने ब्रिटेन जा करके वहाँ के तमाम पुस्तकालयों से ये सामग्री एकत्रित की और भारत में कितने प्रकार के कारीगर थे, जिन कारीगरों को विनष्ट करने की पूरी कोशिश अंग्रेजी सत्ता ने की, जिसमें पत्थर तराशने वाला, लकड़ी चीरने वाला, कुआं तालाब खोदने वाला, चूना बनाने वाला, बांस का काम करने वाला, बढ़ई, संगमरमर की खान में काम करने वाला, चमकीला कपड़ा बुनने वाला, रेशम बुनने वाला, जुलाहे, नील बनाने वाले, हाथकरघा बनाने वाले, मुलायम कपड़ा बुनने वाले, दरी, कालीन, कंबल, डोरी के पर्दा और बोरे बनाने वाले। इसके अलावा जो कारीगरों की सूची है, जिसमें कागज बनाने वाले, पटाखे, दर्जी, तेली, बनौषधि इकट्ठा करने वाले, चंदन की लकड़ी पर काम करने वाले, अगरिया, धोबी, नाविक, शराब बनाने वाले, साबुन बनाने वाले, चावल पीसने वाले, मछुआरे, चटाई बनाने वाले, चित्रकारी का काम करने वाले, घोड़े की नाल बनाने वाले, पीतल का काम, लोहे की भट्टी में काम, कच्चे लोहे के कारीगर, लोहे की सलाखें, तांबे के कारीगर, लोहार, सोनी, शीशा आदि, रुई साफ करने वाले, इन तमाम कारीगरों के काम पर इस अंग्रेजी शिक्षा का असर पड़ा, अंग्रेजों के कुशासन का असर पड़ा और धीरे धीरे भारत की शिक्षा विनष्ट होती चली गई। कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने खोले और उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से कुछ लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की, वे शिक्षा प्राप्त लोग पिछले 150 वर्षों में हमें दिखलाई पड़ते हैं। और उनके आधार पर कई बार हम चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की बहुत अच्छी शिक्षा दी, रेलवे लाइन बिछा दी, लेकिन वे 5 लाख प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजों की सत्ता के 200 वर्ष में किस तरह से विनष्ट हो गए, इसके इतिहास को जानना हो और इसके परिणाम को जानना हो तो धर्मपाल की पुस्तक के 10 भाग को पढ़ना चाहिए। इस अनुवाद ने भारतीय भाषाओं में पढ़ने लिखने वाले लोगों के स्वाभिमान को जागृत किया है। भारतीय समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीति शास्त्रियों के सामने एक बड़ा विषय रखा है। आज इस तकनीकी सत्र में प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कुछ विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। धर्मपाल जी के अनुवादों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान और परंपरा से पुनः परिचय करवाने के लिए now I hand over the session to moderator Professor Bhadani ji and request him to please structure the session and allocate the time to the further plenary speakers. Over to you, sir. Bhadani sir. Sir, please unmute yourself. Sir, unmute yourself, please. Sir, I request you to unmute. Sir, please unmute yourself. Sir, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. नहीं सुन पा रहे हैं. अब आगे सर, आगे. Okay. Thank you, Dr. Seema and Mrs. Sopti. Now I would invite Professor S.K. Sharma of the Allahabad University to speak on this relevant topic. Professor S.K. Sharma. Thank you, sir. Okay. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Good afternoon, sir. Good afternoon. And dear friends, I'm grateful to Professor S.K. Agarwal and Dr. Manoj Kumar for their respective teams for giving me an opportunity to share my views with the galaxy of scholars in the panel and others who have already spoken and those who are going to speak in the coming sessions. I've decided to speak on Anandmat, as was decided with Professor Agarwal. Before I come to the talk proper, I would like to mention a few facts about Anandmat. Anandmat was published in Bengali in a serial form. And my limitation happens to be that I am not a Bengali speaker. My mother tongue is not Bengali. And therefore, my paper largely deals with various translations and various translated versions of the book. So my book does not deal with the original sources, the primary sources in Bengali. And I'm told that the 6 translations of the book are available, but I have access only to 3, 1 in Hindi and 2 in English. So I shall be dealing with them only. And before I come to the paper, let me revise some of the facts about Bankim Chandra Chattopadhyay, Nee Chatterjee. Now, this anglicization of Chattopadhyay to Chatterjee also needs to be paid attention to. After all, Bankim Chandra came from an anglicized family. He was given his education, early education and later education in English. He was raised as an Englishman, and as was the trend in the intellectual families of that particular time, many of his relatives had been converted to Christianity, and there was another prominent family that had migrated. The next step of conversion happens to be leaving this country. That happened to be Datta family. So Datta family and this Chatterjee family, they were related in several ways. But Bankim Chandra started his first novel not in Bengali, but in English. And this was again a serialized novel, as was the trend in England also in that particular time. We are told that Dickens used to publish his novels serially. So this once again is not a fact that needs to be ignored. After all, all this work was being done in imitation. And this novel that he published earlier was Rajmohan's Wife. And it is considered to be a socially realist novel. And it is generally argued that in India, social realist novels did not exist before Rajmohan's Wife, and that was the first attempt of
imitating or borrowing a genre from English literature, and that was being attempted in Bengali at least for the first time. But this novel was never completed. And my thesis is that Bankim Chand realized the futility of this effort and he soon gave it up. And in place of keeping Jane Austen or Charles Dickens as the models, he switched over to another dimension of the novel, which is known as historical novels, but once again under the influence of another Englishman, Sir Walter Scott. Walter Scott, the students of English literature know, was a historical novelist from England, almost a contemporary of Bankim Chand. But this time, Bankim Chand decided not to write this novel in English, but in Bengali. The book was extremely successful and attracted the attention of not only the Bengali people, but also all other intellectuals in different parts of the country. I am told that Bankim Chandra kept on editing the text in different editions, and particularly there is a debate about the word Yavan in that particular book. What is this word Yavan has been debated, because this Yavan word in Sanskrit refers to all the Greeks. But the leftist scholars say that the book was being targeted against the Muslims. So was it against the Muslims, or was it against the British scholars, British rulers, then British rulers, and also the connotations were there against the Muslim rulers? That it has got to be seen. In which particular edition did this word Yavan figure in for the first time after changing it from Muslim to Yavan? I do not know. But I've learned from secondary sources that in the earlier editions, the word Muslim had been used. But till the time I do not have any access to the original sources, I cannot comment on that. But even if it was Muslim, or if it was Yavan, does it change the tone of the book, or does it help us in understanding the different tones? Now, the second fact that I shall be dealing with is whether this book has been hailed by the leftist and liberal scholars of this country as against the ethos of secular India, and they say it is a plea for giving Bharat Mata a concrete shape. And Bharat Mata, by this Bharat Mata, they mean to say that Hindu nationalism, the idea of Hindu nationalism, is being propagated through this particular book. But my thesis is that the book does not propagate any idea about Hindu nationalism. It is simply an outcry of the suffering people. Suffering people, whether they were suffering at the hands of the British people, or they were suffering at the hands of the Muslims, whatever the people were there, whenever they will feel that some impositions are being made on them, particularly unjustified taxations or injustices are being perpetrated, naturally they will make a cry. And when the outcry will be there against the rulers, the various kinds of attributions will be made. After all, the leftist scholars have been trying to prove that the Muslim scholars have been very benevolent to the Hindus, and they were not discriminating between the British, they were not discriminating between Hindus and the Muslims, which once again happens to be a lie. There are also scholars who say that the British people or the British rulers, they were also very generous in India.
various kinds of development programs had been started. If various kinds of development programs had been started, why this book deals with if a mean? After all, the conditions that have been that have been discussed in this book are a result of a famine. And if we study the famines in this country, we come to realize that after the arrival of the British, the frequency of famines in this country has suddenly increased. Naturally, this has got something to do with the policies that the then rulers were having about India, about India's agriculture, and about India's economic issues. The earlier speaker has already talked about Professor Dharampal's books, various histories. There is another important book that I will like to refer to here. That happens to be Sir Sundar Lal's Bharat Mein Angrezi Raj, a 2-volume book that has been published by the publication division of India. In that book, not only Professor Sundar Lal, but even Dharampal Sahab in his various volumes, they have proved how systematically efforts were made to create a situation where the Indian agriculture was completely reoriented in order to give benefit to the industries that were coming up in Europe, and the emphasis on cash crops came. Anyway, the other fact that I would like to mention here is that there are only 2 stanzas from the song Bande Matram that figures as a prayer in the book Anand Mat. Only 2 stanzas from this prayer have been accepted in our constitution, and they have been accepted as the national song. So was that a right decision on the part of the Constitution Assembly, or did they have access to the entire song in original, or they had access only to some translation? That also needs to be explored. Now this prayer has been it has been argued by the leftist scholars that this prayer basically happens to be a prayer to a Hindu goddess. But before Anand Mat, to my mind, there is no description of any Bharat Mata. If at all, that Bharat Mata, the idea of Mata has come into existence. So what my thesis is, that this Bharat Mata was a secular goddess. After all, this book that has been conceived in the light of Sannyasi Vidroh, and there are several historians who say that the Sannyasi Vidroh was not simply confined only to the Hindu saints, but even the Muslim saints were participating in that. So if Muslim saints were also participating in the Sannyasi Vidroh, meaning thereby that if they were praying, and if this book has been conceived in the light of this Sannyasi Vidroh, meaning thereby that if the Muslims were Muslim saints had got to be involved, and they could not be involved with the invocation of a Hindu goddess. So this Bharat Mata has been conceived as a secular goddess. After all, this Matrabhumi, this motherland, has got to be dear not only to a Hindu, it has also to be dear to a Muslim, it has also to be dear to a Christian. Anybody who is living over there, he or she should first of all have allegiance to this country, to the motherland. So it is in the light of these facts that I have tried to do some work, and I've tried to compare some of the translations here and there. So the book has several chapters, and the first chapter happens to be the prologue,
Upochromanica. And Bankim envisions here a world order or a societal construct based in the idea of the bhakti. Now, bhakti is not simply bhakti is not simply a Hindu idea. Bhakti also happens to be a Christian idea. Bhakti also happens to be a Muslim idea, particularly Sufi idea. Now, if uh, there are people who are suffering, and the king, the highest and the mightiest power in the land, is not listening to them, there are only two options left. Either they rise in revolt against that particular power, or they approach some other neighbor king, or they approach the god. Now, approaching god, bhakti, happens to be the easiest way, where they are seeking intervention from god. So this is my idea. And in Dharam Tattva, Bankim, another book of his, Bankim Chandra, he philosophizes this concept in detail. And he says that Anandmat deals with this idea of bhakti as has been elaborated by him elsewhere. And he says that this means both devotion and a dedication to a particular ideology. Now, what is this ideology? This ideology happens to be the ideology of being devoted to one's motherland. There is nothing else, right? And there are various translations of this prologue, which, when compared, show how the words are interpreted in English to subtly achieve the desired effect of setting the scene and thereby influencing the mind of the reader. Now, a little while ago, some of the speakers were saying that there is hardly any translation which does not happen to be the interpretation. So naturally, all these people who were trying to translate the particular text, they are interpreting those particular lines also. So while the first translation and the last one have been faithful to the original Bangla text, there are two translations that have subtly maneuvered the adjectival usage or its lack in stressing the metaphorical darkness of the situation in which the novel begins. For example, Naresh Chandra Sengupta, how does he translate that particular part of the prologue or the introduction? He says, I quote, "Such was this forest, vast, gloomy, and dense, and the time we were speaking of was midnight, and a very dark night too. Even out of the woods, where nothing could be seen, the gloom within the forest was black like the darkness in the womb of the earth." Shri Aurobindo translates this very passage as, "In this interminable, impenetrable wilderness of blind gloom, it is night. The hour is midnight, and a very dark midnight. Even outside the woodland, it is dark and nothing can be seen. Within the forest, the piles of gloom are like the darkness of the womb in the earth itself. Rather, the darkness is within the imagination. But inconceivable is that noiseless stillness of the ever murmurous, ever noise-filled earth." Barun Kumar Roy has translated it in a different way. He says, "It was midnight. On all the sides, darkness enveloped the forest, and the darkness within was the darkness in the womb of the earth. A heavy silence compounded the blackness of this forest." There is still another translation by Julius Lipner. He says, "Not only in this vital, profoundly dark forest, but it is also late at night, and it is extremely dark night, dark even outside the forest. Nothing is visible, but the mass of gloom within is like the darkness in the very bowels of the earth, and indeed the darkness of which we speak could be imagined. But that brooding silence of an otherwise clamorous world
is beyond conceiving. Now I am told that Bankim uses two words in Bangla text, and both these words are significant. These words in Bangla text happen to be Bhugarbhasto, and the second one happens to be Anubhav. So the translation rendered of Bhugarbhasto is the darkness in the womb of the earth, the darkness of the womb of the earth by Aurobindo, and the darkness in the womb of the earth by Roy, and the darkness in the very bowels of the earth by Lipna. And the metaphorical darkness that was a hint at the dependent status of the country is very obvious. The darkness either of the womb or the bowl is reminiscent of the source, is reminiscent of the recesses of human body. And the earlier translators were working on the source text during a period of hope for the birth of a nation. And this faith is possibilities of a birth prompted them to keep the idea of womb intact. However, Lipner was working during the first half of the present century in a nation that was already in a state of becoming. So Lipner is hinting at the darkness present in the underbelly of the nation, and is holding it captive to its own ideologies of restriction. And Bankim's use of the word Anubhav has been translated to feel. And the translators use the word within to convey the idea of the physical darkness percolating the inner recesses of the mind. And the need to feel the depth of the darkness is important, as only then can the need of light or being enlightened to be felt very intensity. There is another word, Jati, Bengali Jati, that needs to be eliminated. This darkness within, and the one way to end it was through bhakti. And Sengupta translates bhakti as devotion. Aurobindo translates bhakti as soul's worship, thereby stressing the aspect of spirituality in nationalist thought. B.K. Roy translates this as devotion to be seemingly secular politics. As he hints in the preface, the novel itself had evolved and was playing a part in keeping a number of controversies alive in India today. Now, let me move on to the second part because I don't have much time at my disposal. So, let me come to the translation of Bande Matram, the idea of Mother India. Bande, Vande, so Bande Matram. So in a country that can boast of a goddess of almost every occasion, the construction of a nation as a Devi was the easiest strategy for a secularist person, or even for Bankim Chatterjee. And he could generate it as a connection between the idea of India and idea of citizen. I am also told that in the initial days, when this Durga Puja was started in Bengal, a large number of Muslims also used to take part in various forms, particularly as Dholwala and all those things, making even the statues, etc. So, and sometimes they also participated in the Durga Puja celebrations. So this idea of worshipping a goddess was not new to the Indian Muslims particularly. So Bankim Chandra could have conceived of this secular goddess, Bharat Mata. So he did not create this Bharat Mata as a typically Hindu goddess. Nor do we find the description of this Hindu goddess elsewhere. Elsewhere means in the religious texts. For example, in some Purana, etc. The idea of Bharat is there, but this conceiving of Bharat as Bharat Mata is not something peculiar that is there. Yes, please. Hello. Can I request you to summarize it? Okay, please. I would just like to cite this Bande Mataram Sujalam Sufalam Malaya Shitlam Sasya Shamala Mataram Bande Mataram.
Now, this is simply the geographical description of the place. And this translation has been rendered as by Sen Gupta as Hail the Mother to her Aibo, who with sweetest water overflows with dainty fruits, is rich endowed, the cooling whom the south wind blows, who is green with crops as on her brow, to such a mother down I bow. And Arvindo translates this verse as, Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free. So both of them have tried to translate the novel. Hmm? And both of them have tried to also refer to the partition of Bengal and revoking of that particular thing that had taken place. So this is how various types of translations they not only refer to the historic circumstances, but they also convey the idea that India could be conceived as Bharat Mata, and this could be conceived as a this could be conceived as a secular goddess. Now, this idea, of course, may sound preposterous to some people, but this is what needs to be considered, and the book needs to be reread in this light again. Thank you very much. मॉडरेटर के आगे चाह रहे हैं बाधानी जी को कर दो कहता हूँ तुम So please, I request Bhadani sir to please unmute himself, sir. बाधानी सर आप बुलाना नेक्स्ट No, I think he is not in the meeting. No, sir. Atnu sir has joined. अपने सर को I think due to some technical issues, Bhadani sir has left the meeting. He'll be joining us soon. Meanwhile, we invite our third plenary speaker, Dr. Atnu Mohapatra, Professor and Chairperson, Center for Diaspora Studies, Central University of Gujarat, Gandhinagar. Dr. Mohapatra has published extensively and has to his credit more than 5 books and many research articles. His areas of interest include diaspora studies, media studies, and international relations. I request sir to kindly share his views with us. Thank you, madam. I first, at the outset, I would like to apologize myself for joining late because we had another program, university program, regarding this Constitution celebration of Constitution Day. So I had missed out the first part of the program, but I was there in the plenary session from 1:30, which was started, and heard Professor Pandey and Professor Sharma, and I would be talking about it different. Professor Ratnu, please switch on your video so that we can see your beautiful face. Yeah, in fact, I am having a poor network because if it is... now you are visible. Now you are visible. Thank you so much. Namaskar. Yeah, if I continue with both video and audio, so then there is an interruption may occur. So okay, now you can switch off. Now you can switch off. Thank you. Thank you. So, in fact, I'll be talking about a little different in terms of, what I have been specializing in for years. That is related to media and within the media also, there is a translation in relation to the newspaper and the magazines and the bulletins, those which were published during the Indian freedom struggle, and how translation has played an important role in vernacular language vis-a-vis English and Hindi. So to begin with, so first of all, I would because it is a big conglomeration of many speakers, big shots, big personalities have already spoken in the inauguration, and already I have heard 2 speakers. So then I thought of just putting some facts and some points
regarding the newspapers and magazines and bulletins uh, on translation issue in relation to Indian freedom struggle. So there is a beautiful quotation by George Steiner. He said, without translation, we would be living in a province bordering on silence. So if I begin to say that Indian language space, which has played a important role, a historic and memorable role in the struggle for independence movement. Newspaper particularly made Indian public aware of the cruelty of the British Empire. During that cruel phase, patriotic poems, songs, and articles frequently got published in newspapers and also through magazines and some bulletins and some handouts. And that somehow has put pressure on British government and made them restless. Through the newspaper, Indian people kept themselves informed of all such activities going on in the country, from one state to another state, how it has reached, how it has generated interest and the inspiration among the young minds, young people. That is very important to understand. And thereby, I feel, I have a strong feeling translation has a very important role to play. So Indian press began to spread its root, as all of us must be knowing, in 1870s. During 1870s to 1918, newspaper emerged as a powerful weapon against the British exploitation. Though the first newspaper had started in 1780 by James August Hickey in the month of January, and that was British originals who was brought in India, and he started this newspaper, and subsequently for a period of more than almost after 100 years. So from 1870s to 1918, it was started, and the revolutionaries words and the volume of revolutionaries have started appearing in newspaper and magazines and bulletins and handouts. So, if you look at the in the history during this modern Indian period, Raja Ram Mohan Rai, who is often termed as a founder of nationalist press in India, his newspaper Sambad Kumudi in Bengal, that published in 1821, Miratul Akbar, that is in Persian, that published in 1822. These are the first of its kind of a publication with a distinct nationalist and democratic progressive orientation. The press was during that period, the press was the chief instrument for carrying out the main political task, political propaganda, education, and formation and propagation of nationalist ideology to arouse, train, mobilize, and consolidate nationalist public opinion. Look at these are the common agenda for newspaper by this nationalist group of nationalists who are fighting freedom struggle. Both the English and vernacular press started by prominent leaders and acted as a catalyst to the freedom struggle. No doubt about it. And on the contrary, what British government had done is, with the enactment of the Indian Council Act of 1861, both Indian and non-Indian press expanded, but there were some laws and rules and regulations were imposed. Since the press was a powerful weapon of the freedom struggle, the Indian nationalists strongly fought for its freedom throughout the Indian nationalist movement. In fact, there are many leaders, there were many social reformers who had brought out many newspapers, handouts, bulletins, and magazines, and prominent among them were, in the early phase of the freedom struggle, the Punjabi by
Punjabi the People by Lala Lajpat Rai, Rast Guptar by Dadabhai Naroji, Kesari and Maratha by Bal Gangadhar Tilak, Hindustan Times by Madan Mohan Malviya, that was a later edition in 1924. So the Vernacular Press Act in 1878 against Indian language newspaper was passed at a single sitting imperial legislative judgment. The act ordered the confiscation of the printing press, paper and other materials. Why? There is a mushrooming growth of newspaper, magazines and bulletins in the published form. All published forms were then British government started put different impositions. However, due to the phenomenal growth of the national movement, the Newspaper Act was published in 1908, and the Indian Press Act was imposed in 1910. We can see there is ups and downs. Indian press enjoyed relatively freedom till 1930. However, the press laws which was brought out in 1932 and the Foreign Regulation Act of 1932 diminished the freedom of Indian press. The press was effective weapons. British could realize this. Hence, they tried to put all sort of mechanism to stop such kind of propaganda, such kind of encouraging, and which was geared up during this freedom struggle from one corner to another. So, in the development and consolidation of their growing nationalist movement, in the creation of national and provincial literatures and cultures, and in the forging of bonds of fraternity with other progressive peoples and classes in the outer worlds, they sacrifice themselves. Now, coming to the translation editions of newspapers, which no doubt had played an important role in Indian independence movement. During that period, look at the inspirational words by different freedom fighters. The one among them was Akbar Allahabadi. वो कहते हैं, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो. यानी, he has tried to send across a message that pain is mightier than the sword, and that proved out later on that proved out to be true and an effective weapon. So many newspapers during that phase of time, like Hindustan, Sarvahitaishi, Hindi Bangwasi, Sahitya Sudhanidhi, Swarajya, Narasimha, Prabhariti, these all published a lot of content, and that spread awareness among people, among particularly young generation people, and make a revolutionary stronger and stronger. Hence, translation has had a distinct role in the development of news language also. If you look at the quality, because the writing patterns and the published patterns was to large extent was concentrated in Bengal, in Maharashtra and in Punjab. These are the provinces where the large content was produced. Hence, but the movement of the people from one province to another was continued. Those who are the learned people, those who are the educated people, they used to travel from one corner to another, and as a result, we could see there are some undocumented fact that the translation was actively engaged in contiguous states. For example, many Bangla written newspapers and magazines and handwriters were translated in Odia, because that's a contiguous state, in Chhattisgarh, also in Hindi in Chhattisgarh and Jharkhand also, and it was circulated among the people just to create awareness. So wherever it has generated, so subsequently it is only because of the translation which got from one place to another and could make the people realize through their regional language. Similarly, if you see the Marathi in Gujarati and Gujarati in Marathi, and Punjabi in Hindi and Hindi in Punjabi, vice versa. So these are the sort of interchange and inter-provinces exchange of literatures, exchange of words, and then the base is the translation. Similarly,
Newspapers like Gadar and Malwa played an important role in paving the way of independence. Many newspapers were published in Hindi language, but they lacked definite standard grammar, vocabulary, and alphabet. In such a situation, the translation of newspaper in different language played an important role to connect with the people of the respective language and to connect with the national spirit. In 1913, the Gadar newspaper used to come out in English and in Punjabi language. And later on, it was coming out in English, Hindi, and Pashto language also. So the demand and the interest of the people could be fulfilled, and as per the people traveled from one place to another place. Suppose one supporter of a national movement had come for any reason to Punjab from Delhi or Punjab from Haryana. So he carried some article, newspaper article, or then it was his initiative or maybe some other initiative, and it got translated into Punjabi or other language, Hindi language also. So the editors, those who are publishing the newspaper, used to publish the newspaper without compromising the values and ensuring the translation in important languages. The biggest contribution of multilingual language newspaper was that they established communication between all Indian states, which was possibly only through the translated editions of the newspapers. Even before this, when this process was begun and started, Malwa newspaper was published in Hindi from Indore, and from March 1848 perhaps, and the editor of the Malwa was Pandit Premanarayanji, who published newspaper in Urdu and Marathi language also. Because look at this place, and again it is in Indore, which is a Madhya Pradesh province, and because of it is a county or state Marathi. So he started whatever it is producing, it was produced in Hindi, so it got translated to Urdu and Marathi language also. Similarly, Gwalior Gazette, 1886 newspaper, that was published in Hindi and English. Later on it was changed as a Gwalior State Gazette. And the contribution of this newspaper was prominent in the independence movement. And they did a tremendous job. So when we talk about this newspaper, which had an important role to play, whether in the form of newspaper or in the form of news bulletin or magazines or maybe handwritten handouts. So it used to translate it and transport it from one place to another, particularly with the motto of inspiring and communicating the other community through their language. And as a result, we could see the entire India was united. Now the role of Gandhi came. Gandhi's translated many, his letters, his newspapers, his handouts were translated. Mahatma Gandhi's newspaper no doubt had played an important role in India's independence. He reached from in South Africa, if you just look a little beyond his presence in India in 1893, and it was in this racial discrimination phase, which caused the British not only in South Africa but also in India. Gandhi stayed in South Africa almost more than 22 decades, and he started the publication called Indian Opinion as a major weapon from early 19th century, early 20th century, 1903 or 5. The first editorial was Hum Swam, that was unsigned document, but written by Gandhi. The main article of his issue, The British Indians in South Africa, was written by Gandhi. Indian Opinion was published in Gujarati, Hindi, Tamil and English. So now from English, it got translated to Gujarati, Hindi, and then to Tamil also. So that was first of its kind which reached to the South India, to the last corner of the country. The main purpose of publication in many languages was to reach to the people of different states at a fast pace, because the entire country was struggling, and
the value, the ethos, and the what do you call the propagandas against the British was encouraged and inspired through this pen, through these newspapers and written material documents. Similarly, due to the large number of Gujarati traders and Tamil and Hindi laborers in South Africa, it was published in Gandhi's document, written document was published in Gujarati, Tamil and Hindi, so that the information got translated in different versions. Later, Gandhi started the publication. We all know that that is Navjivan, and that is in Gujarati, and Young India in English, and Harijan. So all Harijan, Young India, or Indian Opinion, all Navjivan, all these newspapers were translated in different vernacular languages from time to time during that age. And this was vibrant, and this was the major weapon to make people assemble, to make people revolt, to make people uprise against the British Empire. So I believe in this, the translation has a very important and pertinent role in formation of a feeling of independence in India during this freedom struggle. I think this is a very good initiative by Professor Agrawal, because the wonderful what you call webinar, which on translation regarding whether it is books, monographs, poems, newspaper, magazines, or bulletins, or handouts. So, in Indian freedom struggle, translation had always an important role, and such research work can also be done in future, particularly in different areas which have already been left out. So hence, I congratulate Professor Agrawal and the organizing team for a wonderful conference. And I believe this much I had to say about this newspaper, because already people have spoken about the books and their importance, novels and their importance during this freedom struggle. And I think these are my words which I thought of sharing with you. And with these words, I thank all of you and the organizing team, and especially Professor Agrawal. Thank you so much. Mahapatra. Hello. Are you hearing my voice? Professor Badani, if you would like to say something, otherwise I have got a query from every speaker. Now you can structure, if you invite my comment, I am ready for the comment, sir, or if you would like to comment first, then I would invite you. I would request you to speak some or offer some comments on this. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. In fact, if Professor Pandey is there, then I would. This question is addressed to him. In fact, this is not a question but a query, and in fact, a query to make myself rich by gaining the input from him. प्रोफेसर पांडे, आपने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजी को हमने समृद्ध किया है। हम में से अधिकांश ने अंग्रेजी में ही लिखा, किंतु मेरी अपनी राय है कि अंग्रेजी इन सब के बावजूद भी भारत में अभी भी समृद्धि की भाषा नहीं है, और अंग्रेजी आज भी उतनी गरीब है जितनी दूसरी भाषाएं समृद्ध हैं। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं, और आपके निर्देशन में आपने बहुत सारे भाषाई ग्रंथों का संपादन करवाया है, शब्दकोश का निर्माण हुआ है, और एक शब्दकोश ऐसा था जो मारवाड़ी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, और उसके संपादन का अंग्रेजी ट्रांसलेशन का काम आपने मुझे समर्पित किया। और उस वक्त मुझे ये जानने का मौका मिला कि अंग्रेजी कितनी दरिद्र भाषा है और मारवाड़ी कितनी समृद्ध भाषा है, क्योंकि मारवाड़ी में अंग्रेजी के तुलना में करीब 10 गुना शब्द ज्यादा हैं। अंग्रेजों की एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, जिसके तहत उन्होंने हमारी भाषाओं को रिजेक्ट किया, जिससे कि वो अपनी भाषाई सुपरमेसी के आधार पर हर चीज को या तो सब्जुगेशन या डोमिनेशन के आधार पर या ऑर्थोडॉक्सी के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। और यही
मारवाड़ी और दूसरी रीजनल भाषाओं के साथ हुआ। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, जिससे मैं अपने आप को एनरिच कर सकूं। प्रोफेसर पांडे, Professor Pandey has left. Now my observation is about Professor Sushil Kumar ji. Sir, namaskar. I couldn't convey my regards to you when you joined the session. Namaskar, sir. Namaskar, sir. You talked about Anand Math, and therefore I have quoted it next. You talked about certain things, but perhaps you would agree with me that a new contest of alternate hegemony came into being when Anand Math was published. And this aimed at aiming at cultural revival, Anand Math tried to strengthen the nation. And I would like to quote the discussion that is there between Chikitsak, as you are aware, who is an intellectual character in Anand Math, and then there is another character, Satyanand, and there is a discourse they talk about it. And I quote, in order to redeem the land of Arya Dharma, it is necessary first to disseminate external related knowledge. The English are great experts in external related knowledge. They are highly skilled in mass education. Therefore, we will make the English rulers, the people of this land, having become well educated in material reality through English education, will be able to understand inner reality. Then there will be no barrier to the expansion of the land of Arya Dharma. Then the true religion will shine again by itself. So long as that does not happen, so long as Hindus do not become wise, virtuous and strong, until then English will remain imperishable. Therefore, O wise, one desisting from fighting the English, follow me. Now, sir, my contestation here is that in fact from our freedom struggle, from our predecessors, we could not learn elation. And still, the English was made as a vehicle to gain independence from the British. But still, what we find in the Department of English, they still continues to trade on the same trend. Still, our departments have not become the departments through which we can project our cultural ethos to the outside world. Now, this is perhaps the inspiration that we need to take from these people. Now, I would like to know what you have got to say about it. Sir, I agree with you. And I also hinted at this issue when I said that this man, Bankim Chandra, originally started as an imitator of the social realist novels. And then he switched over to his native language, and his entire ethos and his contention and his theme changed. And so his journey, Bankim's journey, basically is from an imitator to an original thinker. A person who was trying to imitate the British Empire, British traditions, British family, British language. And from there, he made a turn. And this turn is as important as the turn of Gandhi, who earlier was an ardent follower of everything English. But later on, he started saying no to everything English, be it language, be it manners, be it culture, be it their text, be it their civilization, be it their law profession, be it their medical profession, right? So revival of Hinduism, or the revival of this ethos of this country, that was the main agenda, and that was the spirit behind the freedom struggle. How to revive. Thank you so much, sir. And we need to continue with that. Unfortunately, our English departments have been towing the line of the Britishers or the Americans, and therefore nothing productive in the sense of national resurgence is being done in many of these departments. Yes, thank you, sir. I would wind up with one observation. Sir.
I was almost a decade ago, I was in one of the conferences that was being organized by the University of Delhi. And there was a Japanese counterpart. He was the vice chair of that session. And after the session was over, we talked about how do you do in your department? And he couldn't get my point of view. Naturally, this is what I did not mean anything very specific. So then I explained to him, and then he explained to me threadbare, sir, number one, we are not teaching anything the English in the department. What we are teaching in the department is classics, Japanese classics in translation, number one. In the name of English, we are teaching only English communication skills and grammar. Now, sir, this is the trend that we need to begin. Even after 70, 80 years of independence, we have not been able to initiate it. And now this is the time that the people like you can guide the people like the other people who belong to the spectrum, the people like me and the other teachers and the whole, let me say, the people who talk about the removal of education. Because we cannot talk about the removal of education in this country. It will be suicidal to talk about the removal of English education, but the dimensions are to be changed. Our English studies must be a means to project India to the outside world. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. I agree with you. Thank you, sir. Thank you. And my pleasure that you joined and spent time with us. In fact, you have always been kind to us and always tried to patronize me like my elder brother. Thank you, sir. I hope you will continue to patronize me in the future also when we look towards you. Now, Professor Atanu Mahapatra. In fact, he is a great scholar belonging to Indian politics. So as such, I have no question from him, and question was not even from Professor S.K. Sharma and the earlier speaker also, Professor N.K. Pandey. But he made some very good observations. Now, my query is that you talked about Anuvada, but still, Mahapatra sir, Anuvada continues to be a secondary domain in our institutions, in our universities. Now, how that domain is to be turned into primary domain, how the secondary domain can acquire the space of primary domain, for that we need to bring about a mind shift. Now, what can be? Now, let us prepare a pathway to bring about that mind shift. How that mind shift can be ensured? How our universities, centers, research centers, because if Anuvad is prospered, I tell you, even research will prosper and the whole country therefore will prosper. So Anuvad is at the root of every research, and the research will be taking place properly if proper Anuvada is available. Now for that thing, one thing that we need to do, perhaps that strikes my mind, we need to be aware, because what has happened during the whole course of history is that we have been dependent on the very notion of accuracy of translation, and we never believed in our own Anuvada. Now the problem is that I will reject the Anuvad that has come from my own countryman, but I will accept the translation that has come from the British or some other European or foreign. Now, until and unless this mentality continues, maybe that it will be very difficult for us to elevate the Anuvad to the level, to the primary level, and transform and enhance the research level. Professor Mahapatra. मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहूँगा, एक शेयर करना चाहूँगा कि कुछ महीना पहले मैंने एक प्रपोजल दिया है भारत सरकार को, जो कि संभवतः कुछ ही दिन में शायद एक्सेप्ट हो भी जाए, खास करके शिक्षा मंत्रालय को मैंने दी है प्रपोजल. इट इज रिगार्डिंग ट्रांसलेशन ओनली, कि जो बात आप कह रहे हैं, अगर मैं सही समझ पाया हूँ, कि बिल्कुल सही समझ पाया, हिंदुस्तान में वो ये कंप्लीटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है, और वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसी के अंतर्गत है.
इसमें हमने ये कहा है उसमें कि अनुवाद कुछ कुछ हिस्सों पे हुआ है, लेकिन जो लोकल नॉलेज है, जैसे फर्ज करिए कि बंगाल में कोई किताब छपी है, उसके पड़ोसी राज्य उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को पता नहीं है। मराठी में कोई किताब छपी है, कोई भी किताब, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, और चाहे अलग किसी का हो, लेकिन उसकी बगल वाले स्टेट को पता नहीं। उसके कारण है कि भाषा। तो इस तरह से अंग्रेजी से किताबें हमारे पास आ जाती है, हिंदी की किताबें कुछ अनुवाद होकर चले जाती है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज में किताबें हैं वो हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इसकी वजह से हमारे जो लोकल नॉलेज प्रोडक्शन है वो ना तो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। इसीलिए हमने एक एपेक्स बॉडी बनाने की है, बात कही है उसमें। और उसमें हर एक यूनिवर्सिटी के, खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एक ट्रांसलेशन बॉडी बनाया जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी को एसोसिएट किया जाए, और उसके अंतर्गत जितनी भी किताबें एक कमिटी जो है वो आइडेंटिफाई करे। पहला फर्स्ट ईयर में आप 20-25 किताबों को आइडेंटिफाई करें जो अलग अलग भाषा, क्या कहते हैं, उसी भाषा में हो, उसको हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद की जाए और उसके बाद उसको भेजा जाए। जब हम अनुवाद करेंगे लोकल नॉलेज को, जो किताबें छपी हुई है, चाहे रिसर्च पीएचडी थीसिस क्यों ना हो, उसके बाद जब हम उसको अनुवाद करेंगे अलग अलग भाषाओं में, तो जाके वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। अन्यथा हो क्या रहा है, कोई अच्छी पुस्तक हो, चाहे अच्छा ग्रंथ हो, वो उसी लोकल भाषा में, तमिल में है तेलुगु को पता नहीं, तेलुगु में है तो कन्नड़ को पता नहीं है, तो इसीलिए वो वहीं की जगह रह जाता है। इसीलिए ये एक साइकिल प्रक्रिया शुरू हो सकता है, जिसमें एक किताब अगर मान लीजिए आज की डेट में छपी हो मराठी में, तो कल गुजराती में होगा, उसके बाद तेलुगु में, तमिल में, ऐसा करके अलग अलग भाषाओं में ऐसी महत्वपूर्ण किताब को हम लाए, तब वो लोकल से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर से अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। इसीलिए एक पूरी प्रपोजल मैंने दी है, पूरी ब्लूप्रिंट दी है, इसके अंतर्गत उसको किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर इलुसिडेशन। हम स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी ध्यान रखिएगा। उसमें ऑलरेडी है, उसमें स्टेट यूनिवर्सिटी का मेजर रोल है, identifying and also contributing, because the state university will identify what are the important books which need to be identified and which needs to be translated. Subsequently they would आपने छिपा के रखा हुआ था ना ये सब, हमने आपसे निकलवा लिया इसलिए। नहीं, इस मंथ पे मैंने सोचा कि आपने जिक्र किया तो मैंने उसको साझा किया है। छिपा के रखा हुआ था ना, छिपा के रखा हुआ था, हमें पता था, इसलिए हमने आपसे बुलवाया है। Thank you so much. Thank you. Thank you. Now over to the moderator, sir. Thank you, Professor S. K. Agarwal, sir. You gave me this opportunity to hear these excellent lectures. प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे साहब का जो आगरा से तशरीफ लाए थे, उन्होंने खास तौर से धर्मपाल की, आगरा से नहीं सर, वो वर्तमान तो जयपुर हैं, लेकिन भूतकाल उनका आगरा में था। केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यक्ष है वो पहले। जी, जयपुर से जो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बहुत सारे धर्मपाल की पुस्तकों के 10 वॉल्यूम्स का जिक्र किया। ये कम से कम बहुत उन्होंने उस संदर्भ में कहा कि आज के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया कि जो गांधी कहते थे एक रमणीय शिक्षा, ब्यूटीफुल एजुकेशन, या कुछ इस तरीके के जो अल्फाज थे, उसको उसी तरीके से उन्होंने व्याख्यात किया। एस के शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनका लेक्चर बहुत एनलाइटनिंग था। सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बंकिम चंद्र चैटर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, पहले वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस में थे, एक पूरी फैमिली उनकी अंग्रेज़ों से बिलोंग करती थी, पूरी एंग्लिसाइज थी, और फिर वो किस तरीके से एक पूरा इंडिजिनस कल्चर में ट्रांसफॉर्म हुए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज का भी जिक्र किया, जैसे यवन शब्द को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग उसका कुछ बताते हैं, उसकी जो व्याख्या की वो काफ़ी अच्छी थी मुझे लगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसकी काफ़ी डिबेट हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत माता इज ए सेक्युलर गॉडेस, ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, डिबेट हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने
भक्ति की विचारधारा को भी उस समय के जो मूवमेंट चल रहा था उससे जोड़ के कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप क्या, तो या तो आप जो शासक है उनसे कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप विद्रोह के रास्ता अपना सकते हैं, या फिर आप ईश्वर से अपील कर सकते हैं। दीज आर ऑल डिबेटेबल पॉइंट्स। ये उनका मानना था कि आखिर में ईश्वर से अपील की जा सकती है या विद्रोह किया जा सकता है। ये जो ट्रांसलेशन के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, उनसे अगर आमने सामने हो तो बहुत अच्छी डिबेट हो, और उस डिबेट में बहुत सारी चीजें क्लियर हो, और उसमें बात करने में भी काफी एकेडमिक बात करने में भी आनंद रहे। सर अब कोरोना से वापस आए हैं सर, अब आमने सामने बात करेंगे। थोड़ा कोरोना है उसके बाद हम तो ये चाहते हैं कि आमने सामने की मुलाकात तो जिसमें देख सकें अग्रवाल साहब कैसे बोल रहे हैं, कि उनका चेहरा दिखाई दे, या ये जो महापात्रा साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं। मुझे जो प्रोफेसर महापात्रा का लेक्चर था वो मुझे इस संदर्भ में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द ट्रांसलेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट, दैट वाज द सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हिच वाज रेज्ड बाय प्रोफेसर महापात्रा। और उन्होंने जो ये बताया कि लैंग्वेजेस में जो पेपर्स निकल रहे थे उनका ट्रांसलेशन दूसरे में होना ही बड़ी बात थी। जैसे गदर का इन्होंने जिक्र किया, गदर का पंजाबी में निकला, इंग्लिश में निकला। ये सारे नेशनल मूवमेंट के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे मेरे ख्याल में मैं अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी इस पे एक पूरी सेमिनार हो 3 दिन की, आमने सामने की हो तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि आपसे चाय भी पी सकेंगे मौके पे, नहीं तो आप बच जाते हैं। आपके विभाग के साथ मिलकर के करवाएंगे सर, आपके जी सर, जी सर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ट्रांसलेशन के रोल को नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में जो व्याख्यात किया गया, दैट वाज एक्सेलेंट एक्सपोजर। एस के शर्मा साहब, आपने जो एस के अग्रवाल साहब जो आपने बात कही, मेरा दिल खुश हो गया। आपने कहा कि अंग्रेजी बड़ी दरिद्र भाषा है और मारवाड़ी बड़ी समृद्ध भाषा है। इस पे मेरा दिल बाग बाग, और मैं आपसे एग्री भी करता हूँ कि राजस्थानी के मैं तो सर डेटाबेस की बात करता हूँ। अंग्रेजी में अभी 1,75,000 के करीब शब्द हैं सर, 1,72,500। मारवाड़ी में करीब 10 लाख शब्द हैं सर, 10 लाख। इसीलिए तो आजकल एनालाइज कर रहे हैं कि मान लो जितनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जो इंडिजिनस वर्ड्स हैं वो उसमें अडॉप्ट किए जा रहे हैं, वो अपने आप को एनरिच अब कर रहे हैं। अब तक जो दरिद्र भाषा थी अब जो है रिच हो रही है। एक दूसरा आपने सेकेंडरी डोमेन और प्राइमरी डोमेन की बात की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपने महापात्रा जी जो बता नहीं रहे थे, आपने उसे खुलवा लिया है। इसके बाद में मैं प्रोफेसर एस के अग्रवाल और इंग्लिश डिपार्टमेंट को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया। थैंक यू प्रोफेसर एस के अग्रवाल, और प्रोफेसर वी के वाइस चांसलर साहब को भी बहुत खास तौर से धन्यवाद कि इनके दौर में बहुत सारे सेमिनार्स हुए, और उसका मुझे बहुत आपके आने से सर बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ी है, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से चलता रहे। Sir, thank you so much for having obliged us, and in fact the Honorable Vice Chancellor has been the impetus behind everything. So we get activated all the time. He tells us keep this doing, and we keep doing. डॉक्टर साहब, ये आप ही लोगों से डराइव करता हूँ और इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इंस्पिरेशन तो आप हैं। नहीं साहब, लीडरशिप का फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब। लीडर्स कौन है उस पर डिपेंड करता है। यू आर द लीडर ऑफ दिस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, एंड प्रोफेसर एस के अग्रवाल एंड अदर colleagues are working under your guidance. Very true, sir. Very true. Sir, my gratitude. Okay, thank you, sir. Thank you so much. My okay, sir. Thank you very much. Thank you. On behalf of Department of English, Maharaja University, and Department of Foreign Languages, Central University of Haryana, Mahendragarh, I express my profound gratitude to all our plenary speakers and moderator, Professor Bhadani, for sparing their precious time and sharing their erudite views with us. Thank you one and all. Now I invite my colleague, Dr. Santosh Shekhawat, to continue with the next plenary session. We now start with our second session of the day. I welcome one and all to this session. We have 4 plenary speakers for this session: Dr. Atul Kumar Ojha, Dr. Sriniket Kumar Mishra, Dr. Vandana Sharma, and Dr. Shamata Chaudhary. Professor
Shruti Dutt Sharma shall be the moderator for this session. Our first plenary speaker, Dr. Atul Kumar Ojha from National University of Ireland, Galway, is currently a postdoctoral researcher on the European Union's Horizon 2020 program under Grant Agreement's 73115 European Lexical Infrastructure Project, led by Dr. John P. McRae in the Unit for Linguistic Data, Data Science Institute, National University of Ireland, Galway. He has been working as an adjunct lecturer at the College of Science and Engineering, NUI, Galway, Ireland. Before that, Dr. Ojha worked as a postdoc researcher at UFAL Charles University, Paraguay. He co-founded a startup named Panlingua Language Services, LLP, based in India. Dr. Ojha received his PhD from JNU. He is actively working on creation of linguistic resources for low-resource languages. Sir, the session is yours for next 15 minutes. Dr. Ojha. Thank you. Thank you for this kind invitation, and thanks for kind introduction. So I start my talk. So the role of translation, it is very important. I will focus my talk on two parts. First is the role of translation in theoretical perspective and technological perspective. So I start my talk. The role of translation, definitely it's very overemphasized in multilingual country like India with thousands of mother tongue It is not exaggeration to say that India is a translating consciousness. As a matter of fact, India would not have been a nation without translation, for we keep translating almost unconsciously from our mother tongues when we converse with people who use a language different from ours. If we look our literature, we found the free translation and adaptation were available in our epics like Ramayana and Mahabharata. And so basically translation of knowledge is very important if we want to serve other information in different languages, like if you want to translate or provide the information, medical information, astronomy, metallurgy, travel, shipbuilding, architecture from Sanskrit, Pali, Prakrit, Persian, and Arabic. And so it is necessary we use translation in the current scenario, especially in India, where we have 22 scheduled language official and several mother tongues and so-called dialects. As a linguist, I don't believe dialects, so it is not a matter, but I use mother tongue. And especially if we want to unite our country, like unite our country India as a together, so it is necessary we translate each language, translate all the information in other languages. If we have Hindi text and we want to convey in Tamil, so it is necessary we use translation methods. Best example, currently government of India use PM Modi speech, and they provide all the information in other Indian languages. At least I know very well it is available in 12 languages, and they are working for 22 official languages. It is not only right now, even if we look independence time, that time translation helped to fight colonial prejudice in tenure, especially by translating our literary and knowledge text into English. We conveyed to the world that the colonizer was in no way superior to us, for we too have a long history of our rich cultural heritage. Translation has changed the Occidentals, old Orientalists,
conceptions of India. For earlier, the British had translated from India only what suited their taste, but now the empire is writing back, letting them what they have to read to understand our people and culture. There is no denying the fact that translation also promotes the growth of indigenous literature and knowledge by bringing into our languages the great wealth of other literatures and cultures. So basically, the idea, these all the importance, if you look, all the importance, cultural heritage, our literature, Indian literature, Mahabharata, Ramayana, and we want to provide all the information in current generation, especially when people don't know Sanskrit, they don't know Prakrit, they don't know other ancient language. So how we can communicate, how can we provide this information, especially if you want, you have to, we wanted to, we are we need to dependent on, especially for language expert, like you see, you search Sanskrit people are, Tamil people are other languages speaker. So for these texts, we can easily convert through the automatic method, especially technological. We can use automatic technological like natural language processing method. Similarly, when we see Google translation, but unfortunately, it is not available for our country. Very few empty system is available. Machine translation, we call machine translation for automatic translation. So we, I and our other researcher in language technological, they build empty systems. They are working on empty system for Indian languages, especially my company Panlingua, which is established in 2019. And Panlingua was is acronym of Pan stands for Panini, and Lingua is stand for language. So the idea is our basically we are working for how do we convert all the information, cultural heritage, or our old epics in Indian language provides in Indian languages and other language, other mother tongues. So for this purpose, we need to we create a text from like Kalidasa stories of Vigyan Sakuntalam or others. So we create the digital text and then ask to translator, they translate, and then we will we build machine translation. So in brief, translation is a connect bridge which has need the multilingual nations such as India together and enabled all the strata to find against the colonizer in a big way in the post-global era. The translation is bound to play a greater role, and therefore translation be recognized as independent discipline. And in summary, if we wanted to fill up language barrier fastly, so we need to build machine translation. And in machine translation, okay, I give you a brief idea what is a machine translation and why. In the machine translation, especially, we don't focus like, okay, for all the correct 100% translation. No, machine translation doesn't provide 100% translation. They provide summary. They assist to non-native speaker or non-language. They don't know. Suppose if I know Hindi and I don't know Tamil, so if I want to see what has written in Tamil, so I can grasp what is the summary. So I can, if we use machine translation, so we can grasp. So the idea is, if we use machine translation system for these cultural heritage or Indian histories and literature, so it is easily available for other
language speakers. So that's the reason translation is a very key point, and it is a very important for our country, especially India, where we have more than 1,000 mother tongues. So this is my overview of the talk. If any has any questions, so I am ready to discuss. Thank you, Dr. Oja, for giving us a wonderful illustration of the importance of translation in a society where people belonging to other communities, other cultures live. We can take up questions after, I think. Yeah, thank you, no problem. Other speakers also. I think we should, now I request Dr. Mishra to present his point of view. Dr. Mishra, please. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी का और डायरेक्टर ऑफ दिस सेमिनार प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और इस अवसर पर मैं कुछ अपनी बात कह सकता हूँ। हालांकि मेरे से पूर्व प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता मैम और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर के बाद बोलने के लिए बहुत कुछ कम रह जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अनुवाद की भारतीय परंपरा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो भी है संक्षेप में मैं रख सकूं और किस तरह से इस प्रतिरोध, जहां तक हम लोग प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसके बारे में अतनु सर ने भी बहुत सारी बातें कहीं प्रेस से संबंधित कि किस तरह से पत्र पत्रिकाओं अखबारों में अनुवाद का प्रयोग किया जाता था। मैम नीरजा मैम ने बताया कि किस तरह से क्रांति के लिए भगत सिंह या दूसरे लोग जो हैं वे लोग भी वो विचार रूस से हो या फिर अमेरिका से हो या फिर वह फ्रांसीसी राज्य क्रांति का हो, उसका प्रयोग अपनी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए वे प्रयोग करते थे। हालांकि मैं अपनी बात शुरू करूंगा सबसे पहले पुर्तगाल के राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं जोसे सारामागो। उन्होंने कहा है कि राइटर्स मेक नेशनल लिटरेचर व्हाइल ट्रांसलेटर्स मेक यूनिवर्सल लिटरेचर। जो लेखक होते हैं वे अपने राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण करते हैं, सर्जना करते हैं, सृजन करते हैं, जबकि जो अनुवादक होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय सर्वजनीन साहित्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि राइटर या जो लेखक होता है वह कोई एक विशेष भाषा में लिखता है, उसके कुछ विशेष पाठक होते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद जो है अनुवादक के कारण ही उसका जो कार्य है, जो उसका साहित्य है, वह उस भाषा विशेष की जो बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है, उसको वह पार कर पाता है। जहाँ पे बात हम करते हैं ट्रांसलेशन के इतिहास की, तो ट्रांसलेशन हम सभी परिचित हैं कि यह लैटिन भाषा से है और इसके क्या मायने हैं। हालांकि इतिहास में जब भी हम पुस्तकों को देखते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है सब कुछ, बाइबल के ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, हम देखते हैं कि उन्हीं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में भी देखें, भारत की जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके द्वारा भी कम से कम हम अशोक के काल से देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑफिशियली कार्यालयी शासन के द्वारा जो अभिलेख थे, जो प्रस्तर लेख थे, उन पर भी
जिसमें मैं पहला नाम लूंगा कंधार। कंधार का जो द्विभाषिक अभिलेख है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, जिसका डेट है 260 ईसा पूर्व, उसमें ग्रीक और अरेमाइक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कम से कम यह साक्ष्य तो आज भी मौजूद है, जो कि काबुल के म्यूजियम में है। हालांकि अब हम देखें तो अगर हम बात करें तो भारत में 3 स्तर पर अनुवाद होते हैं। जहाँ तक कि अनुवाद शब्द ही है, यह भी मुनियर विलियम्स के द्वारा ही प्रयोग किया जाने लगा, जो आधुनिक अर्थ है ट्रांसलेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि यह शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जो आधुनिक समतुल्यता की बात हम करते हैं ट्रांसलेशन के लिए अनुवाद की, उन्होंने किया था। और हमारी जो परंपरा है, वहाँ पर हमारे यहाँ कॉपीराइट जो होती है वो चीजें कम थी। हम ट्रांसक्रिएशन, अनुसृजन की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव होता था, और उसे हम इस बात से भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो रामायण है उसके कई वर्जन्स हैं, जैसे कि रंगनाथ रामायण तेलुगु का है, कम रामायण तमिल में है, कृतिवास रामायण बांग्ला में है। इसी तरह से महाभारत के भी कई संस्करण हैं, कई लोगों ने लिखा है, जिसमें कि सबसे जो प्रसिद्ध है बाद का महाभारत, उसमें आदि कवि सरला दास उड़िया में जो उन्होंने लिखा है बहुत ही विस्तृत है, और उसमें किस तरह से सृजनात्मक जो क्षमता है वह उभर कर आई है, हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ अनुवाद के साथ साथ सृजन भी है, और अनुवाद को, इस तरह के अनुवाद को मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा, और खास करके वह उदाहरण भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास के जो राम द्वारा रचित रामचरितमानस है उससे है। और हम देखेंगे कि गीता का श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजान्यमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी तरह का जो समान अर्थ वाला है, आप हम दोहा देख सकते हैं कि जब जब हूँ ही धर्म की हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीड़ा। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों श्लोक और दोहे हैं उनके अर्थ समान है, और यह अनुवाद का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से एक ही जगह से नहीं है, और इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने खुद ही लिखा है शुरू में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदा अन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो तुलसीदास ने खुद ही स्वयं ही कहा है इसमें कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वह भाषा में लिख रहा हूँ। भाषा सामान्यतः हम संस्कृत और भाषा दो चीजें थी, तो भाषा हम जो आम जन लोग बोलते थे, जिसे समझते थे, जब जो सब तक जिसकी पहुंच होती थी उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते थे। तो वो खुद कहते हैं कि भाषा में, आम लोगों की भाषा में मैं जो नाना प्रकार के जो हैं, विभिन्न प्रकार के जो निगम हैं, आगम हैं, जो ग्रंथ हैं, उनसे मैं चीजें ले करके लिख रहा हूं। यानी कि वो खुद कहते हैं कि मेरा अपना बहुत कुछ इसमें नहीं है। इस तरह की अनुवाद परंपरा भारत में सदैव रही है, और इसी के फलस्वरूप भारत में नए विपुल साहित्य सृजित हुए हैं, जो कि जिससे कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वे समृद्ध हुई हैं। वो हम कन्नड़ की बात करें, उड़िया की बात करें, या तमिल की बात करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह से हमें अनुवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग इसके लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को, खास करके उनका अपना मकसद था कि ईसाई धर्म को फैलाना, उसका प्रचार करना, यहाँ से पैसे
बनाना, लेकिन जो भी अच्छाइयाँ थी कम से कम वो सीख सकते हैं। और उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा बाइबल के ट्रांसलेशन का। तो सबसे पहले भारतीय भाषाओं में बाइबल का प्रथम जो अनुवाद हुआ वह विलियम कैरी ने 1808 में नूतन धर्म नियमः संस्कृत में ही किया था, जो कि बैप्टिस्ट मिशनरी प्रेस इन श्रीरामपुर, जिसका जिक्र सर ने भी किया था, वहां से पब्लिश हुई थी, यह प्रकाशित हुई थी। और उसके 10 वर्ष बाद 1818 में ओल्ड टेस्टामेंट, सामान्यतः हम देखें तो बाइबल के ट्रांसलेशन में भी पहले न्यू टेस्टामेंट का ही ट्रांसलेशन होता है, बाद में ओल्ड टेस्टामेंट। उसके पीछे दो कारण हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है न्यू टेस्टामेंट से जुड़ी हुई हैं और न्यू टेस्टामेंट छोटा भी है। खैर उस संदर्भ में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम बाइबल ट्रांसलेशन के लिए संस्कृत में किया और उसके बाद ही अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। इसी तरह के आदर्श को, मॉडल को हम अपने लिए अभी, खास करके जहां पर अगर हमें बहुत समृद्ध एक कॉर्पोरा बनाना है, एक साहित्य तैयार करना है, जो ज्ञान संपदा है वह हर भारतीय भाषा में जो भी लोगों की समझ है, अगर उस तरह से करना है तो मुझे लगता है कि हम उस तरह की जो भी आवश्यक सामग्री हो, ज्ञान संपदा की सामग्री हो, वांग्मय हो, उसे हम पहले संस्कृत में अनुवाद करें और उसके बाद दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद करें। संस्कृत के संदर्भ में जो विलियम्स हैं, मोनिये विलियम्स, उन्होंने कहा भी है, खास करके उन्होंने जो इंग्लिश, खास करके संस्कृत में उन्होंने बहुत काम किया है, इंग्लिश और संस्कृत शब्दकोश की भूमिका में उन्होंने लिखा है 5 नवंबर 1851 को कि ऐसी एक भी भारतीय भाषा नहीं है जो संस्कृत से शब्द उधार लिए बिना धर्म और विज्ञान के विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हो, चाहे वह तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो या कोई दूसरी। हम लोग, हालांकि यह एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि कुछ शब्द शायद आज के समय में हम प्रूफ भी ना कर पाए, साबित ना कर पाए कि कोई शब्द वह शब्द मूलतः संस्कृत का है या तमिल का है, लेकिन हम देखें तो कई शब्द हैं जो कि आज भी प्रयोग होते हैं। जैसे हम संस्कृत हिंदी में बोलते हैं फल, संस्कृत में भी वही है, और तमिल में पड़म होता है। तो फ, चूंकि ह साउंड है नहीं वो महाप्राण, तो प हो जाता है। ल के 3 वेरिएशंस होते हैं, ल, र, ड़, तो उस तरह से, एंड देन म, चूंकि कॉन्सोनेंट एंडिंग तमिल का है तो वहां पे म है, तो पड़म है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनकी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें बांग्ला, ओडिया, वहां पे अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, अगर तुलना करें, तो हम देखेंगे कि हिंदी में ही संस्कृत के मूल शब्दों का कम प्रयोग होता है अन्य भारतीय भाषाओं के। तो हम उस एक मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें कि संस्कृत को मध्यम भाषा या सेतु भाषा के रूप में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और उससे अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करें। प्रतिरोध की भाषा के रूप में और जागरण के लिए अनुवाद का मुगल काल से ही प्रयोग होता रहा है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस लोगों को जागृत करने के लिए, अपने धर्म में आस्था बनाए रखने के लिए, एक सामंजस्य, वैष्णव और शैव में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कार्य किया था, उस तरह से अनुवाद का हमेशा से कार्य रहा है। हिंद स्वराज के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कई बार अंग्रेजों की शिक्षा, अप्रत्यक्ष रूप से ही अंग्रेजी शिक्षा के बारे में व्यंग्य किया है, उसकी आलोचना की है। उन्होंने मूलतः गुजराती में ही लिखा था, लेकिन वह जो प्रति है जब्त कर ली गई, तो बाद में उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेजी की रिच बहुत है, बहुत ज्यादा प्रसार है, लोग जानने वाले हैं, तो उन्होंने फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद कराया। तो यह भी एक लोगों को जागृत करने का जरिया हो सकता है, साधन हो सकता है, और विरोध का भी
साधन हो सकता है कि उनके शासन का विरोध, उनकी व्यवस्था का विरोध। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर श्रीनिकेत मिश्रा, आपने बड़े ही सुंदर और प्रामाणिक ढंग से अनुवाद और अनुवाद की महत्ता पर प्रकाश डाला। Now I request Dr. Vandana Sharma to present her point of view. Dr. Vandana Sharma, please. So may I introduce the speaker? Dr. Vandana Sharma, please. Ji, namaskar, good afternoon. Good afternoon. Thank you very much, Professor Sharma. It's a great pleasure. It's indeed a great pleasure to be part of this very interesting and timely seminar on remembering the role of translation in Indian freedom struggle, being organized by the Department of English, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, and Central University of Haryana. I'm really glad to be part of this seminar, and I had been listening to various deliberations, various discussions which were being carried on and deliberated upon, particularly related to the role of translation and how various works they have been translated and rather transcreated India in many ways. My paper is very much related to this particular aspect, that how India has been transcreated and how India has been transcreated in various translations. And I would be focusing in my presentation on women's life narratives. So the title of my paper is Transcreating India, Translating Women's Life Narratives. When we look at the treasure trove of translation activity and women's writing, when we place them side by side in India, right from the pre-colonial to the post-colonial times, it raises the question of power across colonial and post-colonial difference. Like, who is translating, what is translated, and for what, and who hold the space for translations. When we look at the pre-colonial translation, whereas the pre-colonial translations, they upheld the prestige of source language. And there was a shift thereafter to the adaptations, to the rewritings of colonial Western texts. Just a minute. Yes. So, whereas the pre-colonial translations, they upheld the prestige of the source language. There was a shift to the adaptations, to the rewritings of the colonial Western text as a response to the exploitation of the colonized by the colonizing powers. So my paper aims at an examination of the agency of post-colonial writer, particularly the women writers, so as to investigate the colonial history and the contested life narratives of two powerful women writers, Kamala Das and Amrita Pritam. Echoing Benedict Anderson's imagined communities, the translation of these two stories, these life narratives, these autobiographies of Kamala Das and Amrita Pritam, reverberated the idea of nation, where a mother tongue was perceived as the marker of identity on one hand, and women's self-assertion, exhibiting their fears, exhibiting their failures, which emerged palpable in the steady rise of women's voices throughout the country. The paper analyzes the autobiographies of Kamala Das and Amrita Pritam to locate them in the flux of their reminiscences, so as to be able to discover and understand themselves both as women and social beings who lived in highly turbulent times of freedom movement. So by examining the marginal existence of women, the picture of the nation which emerges is that of a male-governed world where women's struggle for identity and self-fulfillment is negated on various fronts. So the primary characteristic, as we know, of the autobiography as a literary form is a
is a quest for self-definition, is a quest for self-definition on the one hand and for authenticity of being. So this act of writing about oneself brings together the personal, unassimilated experience of a writer and the shared values of culture. In the book review, Autobiography as a Literary Form, studies in the autobiographies of Edwin Muir and Stephen Spender, Manjula Bose writes, I quote, "In India, there are very few autobiographies which can be called as the complete truth. Mahatma Gandhi's My Experiments with Truth is nothing but complete truth. The autobiography of Jawaharlal Nehru has a beautiful blending of the personal history with national history, which reveals the evolution of writer's personality against the background of the country's freedom struggle. Nevertheless, when we move on to the women autobiographies, long, smothered veil of the incarcerated psyche imprisoned within the four walls of domesticity echoes a nation immersed in gender tyranny. In the words of Shashi Deshpande, all writing, particularly female writing, stems from personal experience, but it is neglected and ignored by men. So as writing is born out of personal experience, the fact that I'm a woman is bound to surface. So women's writing in general, including women's autobiographical writing, is frequently ignored. Many women writers in the 19th and in the 20th centuries chose to publish using male pseudonyms, as we all know. So through autobiography, the writers, they try to share their experiences of grief, of agony, but at the same time of ecstasy too. For instance, Lakshmi Bai Tilak's autobiography, Smruti Chitre, Literary Memory Pictures, renamed as I Follow After in English version, is a very straightforward autobiography where Tilak, she shares about her being a Brahmin by caste, where the rules of purity and pollution strictly define one's social identity, and punishment for opting out of the prescribed code of conduct is excommunication. Likewise, Vijay Lakshmi Pandit's autobiography, The Scope of Happiness, gives a detailed account of the birth of a girl in Nehru family. Her autobiography, India Calling, tells the story of a relentless struggle in the male-dominated society to establish a place for herself. But when we look at the autobiographies of women writers like Kamala Das and Amrita Pritam and their exploitative journey to the center of being, it traverses a new ground of literary and subjective experience. We confront a new ground of literary and subjective experience, and where they come to terms with the changing notions of femininity. They are women who are committed to the truth of self. They examine the male-oriented social pattern with the purpose of probing into their inner self and the world around in relation to themselves. They unveil the hidden side of their personality. Therefore, the idea of autobiography as expression becomes an accepted means for the women writer to explore her personal identity, as well as it creates a newer and a better perception on gender issues, their unconventional ways of thinking. Therefore, they become, which made them quite controversial, of course, where they have revolted against the traditional man-woman relationship. Now, Kamala Das's Brihtkatha, My Story, and Amrita Pritam's Rasidi Ticket, that's translated as The Revenue Stamp, show their disapproval of the conventional ways of thinking. Their autobiographies depict, of course, women's struggle to establish their identity in this male-dominated world. And these women, they also show that they are unafraid to challenge male decisions and male dominance to seek their identity. They share their own experiences without shame or fear or contamination from outside. So sharing these experiences, which include past actions, choices, it is a necessary part of struggle of these individuals who wanted to try and transcend the old roles and crystallize their identities according to new definitions, roles, and life spaces. So this sensitivity amongst writers can undoubtedly be attributed to the influence of the feminist movement.
As Foucault argues that all manifest discourse is secretly based on the already said. This already said is not merely a phrase that has already been spoken or a text that has already been written, but a never said and incorporeal discourse, a voice as silent as a breath that is merely the hollow of its own mark. So it can be argued that my story is, as incorporeal discourse, the silent breath that permeates Antekatha, the consciousness of an I that performs, lives its gender in Antekatha, has an altogether different angle of entrance, that of an English language and education. The inferiority complex which marks the beginning of the vernacular is first attributed to the tutor in the English version and then to the language itself in Malayalam version, in what I argue to be a gradual systematization of concepts, knowledge and experience in language. Born in rural Kerala, brought up and schooled in Calcutta, married to a bank officer in Mumbai, spending a life divided among the cosmopolitan cities of Calcutta, Mumbai and Delhi. Kamla Das, alias Madhvi Kuti, projects a translated self living in translated worlds, an intellectual self-fashioned in the English tradition, yet bearing the weight of Malayalam linguistic and cultural history. Her autobiography is both writing to and translating from language of patriarchy. Probably it is this translatedness of being that helped Kamla Das to challenge the authoritative codes of languages and cultures. So translation here could be a metaphor for any language activity in language that destabilizes cultural identities and received notions of selfhood, questioning the process of notion of finality in translation. So she thus uses translation as a tool to deflect the power of language, not only to deflect but also to construct reality. If Madhvi Kuti is Kamla Das in translation, what she does in Antekatha is to learn the right to transgress from the trace of the other. Now, when we look at Amrita Pritam, another iconic Indian writer, whose works as well as life were a bold statement that redefined not only just the Punjabi literary canon, but also found new words and images for how Indian women perceive themselves. The famous writer and journalist Khushwant Singh had once told Amrita Pritam that the whole story of her life was so inconsequential and brief that it could be easily contained within the small space at the back of a revenue stamp. And she remembered the joke and called her autobiography the Seedhi Ticket, the revenue stamp. A rebel, a questioner of norms, a devil's advocate of sorts. So Amrita Pritam, she asked difficult questions and challenged those things that everyone accepted as a norm. So her increased involvement in the social work in the mid-1940s, her working with the Lahore radio station for a brief period, and her angst at the helplessness of the commoners, especially women, made her works around that time become more and more rebellious and socio-political in nature. The year 1947, the partition of country became a watershed for her both as an individual and as a writer. She witnessed innumerable, unspeakable human tragedies. The communal riots that continued for several months during the refugee influx to and from both sides led to such mindless violence that, like most other survivors of this tragic history, it left an indelible mark on Amrita's mind for the rest of her life. So the title, the revenue stamp, symbolizes the writer's own soul, as other stamps used to get various shape where revenue stamp remains static. She was born in August 1919 at Gujranwala, which is now in Pakistan. So her mother died, and when she was 11, after that she and her father moved to Lahore. She was 11 years old and had not developed the sense of reciprocity by then with either her parents. So she went through the vacuity and sense of solitude as she was the only child. So she started loving the
love lyrics secretly as she used to, afraid her father, who informed her to try her hands over devotional poems. His father represents the phallocentric dogmas and convention. So it displays how women finds it difficult to voice out her feeling, emotion, etc. At the age of 4, she was engaged and was a teenager of 16 when she was married off to Pritam Singh, and thus the name Pritam was suffixed to her name from 1935. So then she came down to Delhi as a refugee and inscribed her agony and gave vein to her feelings by writing the much acclaimed and popular poem, Aaj Aakhan Varishanu. So her autobiography is a record of her journey that resonates with the partition trauma, we can say, that she undertook on outer surface as well as interflows, consisting of 6 chapters entitled as Resurrecting Time, Meeting with Centuries, Ordeal by Fire, In Silence Passion Smote, The Phoenix Dynasty, and On Palm Henna. The revenue stamp narrates the public side of her life as a written part and puts her career in the text of an autobiography. Her role as a beloved finds her womanly passion irresistible and inevitable. In patriarchy, one expects women to present herself as being fulfilling the man-oriented roles. For women writer, the act of writing autobiography carrier a dark burden on one hand. They have to maintain the aesthetic interest and the subjective shades of self on the other hand. So it's very important to notice that Pritam didn't offer much space, rather ignored the details of her married life and relationship with her husband. She had been silent about her husband in this autobiography, about her in-laws, so which carries a double sense of the experience she had in marriage. It hints at the reason why she had to marry seems to be rooted in that socio-familial compulsions, as she states in the autobiography. I had to repay debt to society, but speaking for myself, I surely feel the weight of doubt. So she communicates that marriage was a social bondage forced upon all women of her times. And Amrita Pritam's vision of womanhood is so clear and without inhibitions. Her mind was communicative in its perception, and she could visualize the male mind through her characters. She could also sympathize with their agonies. She never denied the gender orientation harshly as a feminist world. The recognition of gendered experiences and that of gender roles was felt by her as an artist more profoundly than any common women. So she seemed to offer some feminist implications in her philosophized observations of women's identity and existence when she states, the only difference between male and female mind is that their drawbacks are different. Confession, complaints, cries, dreams, all these things create her own credo as a literary artist, as one who has lived very truly. To conclude, since most of the Indian women autobiographies reveal their tendency to treat women's culture as a subculture, men's culture being the main culture, women autobiographers' writings deal with the aspects of gender consciousness. They interpret female histories from the standpoint of their own social positions, compromises they have been forced to make, their narrative give form to and legitimate the process of post-colonial and national coming into being. Just as, stories codify national identity, national reality in space, and allow emergent national identities to be performed. Therein, the iconoclastic women autobiographies like Kamala Das and Amrita Pritam, they have made immense contribution through their autobiographies by projecting a women, by projecting a world where the nation was tarnished by the colonial powers on the one hand and the ethos which was extremely biased on the other. So Kamala Das and Amrita Pritam and their autobiographies and their translations definitely hint towards that particular aspect. Thank you. Thank you very much, Dr. Vandana Sharma, for your enlightening discussion. Two important writers, women writers, Kamala Das and Amrita. Thank you very much. Sir, thank you so much, Professor S.D. Sharma, sir. In fact,
Hello. Pranam, sir. Namaskar. Sir, pranam. I am also grateful to you for associating me with this wonderful seminar. You always oblige us on these occasions, and we find you a ready-made solutions for these problems. In fact, these problems are always welcome for you. You consider them as a pleasure, and that is our fortune. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. If you permit me, I would like to make little observations about the presentations which have been made. Need only one more is left. Namaskar, sir. Namaskar. May I introduce the speaker? May I introduce the speaker? Please. Dr. Shamta Chaudhary is head Department of English in School of Social Sciences and Humanities and Director Research, VMOU Kota. She holds a doctorate degree on a comparative study of formal and informal methods of teacher education in teaching English. She has served as Director, Center for Research in Distant Education, VMOU Kota. She has been awarded Rajasthan Leadership Award 2012 for her contribution in the field of education. Her teaching and research areas include post-colonial literature, Indian literature, Commonwealth literature, Dalit literature, contemporary Canadian literature, short fiction, distance education and communication skills, etc. Her articles have been published in various national and international journals of repute, and she has presented papers at national and international conferences and seminars in India and abroad. Over to you, ma'am, Dr. Shamta Chaudhary. Thank you, Santosh ma'am. It's a pleasure to be amidst you. And I'm thankful that I've been a part of this international webinar. And since morning, the inaugural, you can say the session was such igniting that I think many avenues have been opened up. And I feel that everybody is so much eager to know how translation did wonders during our history also, in our freedom struggle, and till date. What theories have been formed? I thank you again, Professor Agarwal, Seema ma'am, and Santosh ma'am, and all the department members who have been part of this journey to make it a success. Indeed, the inaugural session was indeed a success, and as we say, when you see the first glance, you come to know how best it has come out. Same goes with it. Thank you for inviting me here. See, it's generally said the history of translation is the history of human civilization and understanding, and sometimes of misunderstanding. Stories travel from culture to culture, and with their transmission through translation takes innumerable forms. Today I'll focus on how folk tales, religious texts, and history have been translated not only through emotions but also the culture in translation. The classic case is said to be that of our own Panchatantra. In an evocative essay, Amitabh Ghosh has the following to say about Panchatantra. I quote, "These stories too have no setting to speak of, except the notion of a forest. Yet the Panchatantra is reckoned by some to be the second only to the Bible in the extent of its global diffusion. Compiled in India early in the first millennium, it passed into Arabic through a 6th century Persian translation, endangering some of the best known of the Middle East fables, including parts of the 1001 Nights. The stories were handed on to the Slavic language through Greek, then from Hebrew to Latin, a version in the later appearing in 1270. Through Latin, they passed into German and Italian. These stories left their mark on collections as different as those of La Fontaine and Grimm brothers. And today, they are inseparable part of our global heritage." Unquote. In the Indian tradition, we have an exalted notion of translators.
We do not designate Tulsidas, Kirtivyas, Pampa, Kamban as translators of our great epics, but as great poets per se. In India, we have seen that the retelling of the stories of Ramayana and Mahabharata in regional languages, the significant translations which I wish to communicate about, known to my knowledge, took place at the time of Emperor Akbar. In his efforts to promote understanding among religions and promote interfaith dialogue, Akbar sponsored debates among scholars of different regions and encouraged the translation of Sanskrit, Turkish, and Arabic text into Persian by setting up a Maktab Khana, or translation bureau. Persian translation of Sanskrit text, including Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Bhagavad Puran, Atharva Ved, Yoga Vasisht, etc., they all were translated. And the translations carried out in this phase can be characterized as a dialogue of civilizations. Prince Dara Shikoh, a profoundly learned scholar himself, not only promoted this trend, but made it his lifelong mission. See how the cultures were intermingled. We were able to see what other languages and what translation did to our culture. His interest in comparative understanding of Hinduism and Islam prompted him to take assistance from the Pandits of Banaras with the translation of 50 Upanishads into fluent Persian. It is said that he completed the whole translation in 1657, and it was given the title Siri Akbar or Siri Asrar, the Great Secret. This text was translated into English by Nathalie Hedhall in the colonial period and into French and Latin by Etienne Dolet, the famous translator and the scholar of Gen Avesta. In the preface to Siri Akbar, Dara Shikoh explained how for some time he was upset by the assertions of radical differences between Islam and other religious practices of Hindus. He began looking for a common truth between Hindus and Muslims. As Muslims have a revealed book which determines their world view, he was looking for a divine world in the Hindu religion, and thus the translation of Upanishads came to his mind. As is evident, the primary pivot of Dara Shikoh's translation was the project was of synthesis of spiritual, intellectual, social, which gave us the clue about the choice of text and the strategies employed in the translation. In his own book, Mujmuha al-Barain, written in 1654-55, seems to work out in considerable detail the terms of this synthesis, painstakingly exploring equivalences and terminology between the Sufi philosophical system of the unity of being and the Vedanta. Later, it was translated into English by the Asiatic Society of Kolkata also in 1929. Dara Shikoh's project can be called as a cultural specificity, but there were others who were only aware of the pitfalls, and they felt that such projects could not be carried. When we move forward, we see that the next great moment of translation in India, especially in the context of northern Indian languages, happened during the heydays of British colonialism. It started when Fort William College was established in Calcutta in 1800, and Scotsman John Gilchrist became its principal. He, along with his munshis, set themselves the task of putting together all the books in simple Hindustani works in Persian and Sanskrit like Gulistan, Kissa Chaha Darwesh, Kissa Gule Bakavli, Dastan Amir Hamza, Singhasan Battisi, Kissa Alif Laila O Laila.
So many more were taken into account, and though this was done apparently for the instruction and assimilation of the British officers who came to India to rule the country, the easy accessibility and lucidity of the prose made these works of romances extremely popular, and they were translated and retold in many Indian languages, making a deep impact on their literature. G.N. Devi has indeed, like other literary historians in India, like Sisir Kumar Das, also credits Persian and other Islamic languages with felicitating the rise of indigenous languages. Devi says, I quote, the emergence of Bhasha literature coincided with, even if it was not entirely caused by, a succession of Islamic rules in India. The Islamic rulers, Arab, Turks, Mughals, brought with them new cultural concerns to India and provided these current legitimacy through liberal political patronage. The languages, Arabic and Persian mainly, and the Urdu, which developed indigenously under their influence, brought new modes of writing poetry and music. I quote, the intimate contact with Islamic cultures created for the Bhasha literature new possibilities of continuous development. These possibilities were realized through translation and adaptation. Two prose romances, Kissa Chahar Darwish and Kissa Gul-e-Bakawli, were very popular across many Indian languages. In an essay on Bankim Chandra Chatterjee's emergence as an architect of Bangla prose, Tagore himself has stated, I quote, with his emergence, the darkness and stagnation that gripped Bangla literature disappeared. And disappeared the legacy of Vijay Basanta and Gul-e-Bakali, those escapist romances. See how they have been translated and how they have lost their legacy. So we can say that literature has played a very important role in history. It has been used and is still being used as a tool of information. At the same time, it would be safe to say that literature has played a huge role in pretty much every major revolution in the history. The American Revolution, was heavily influenced by pamphlets written by Jonathan Mahay, John Dickinson, Tom Penny, amongst many others. Tom Penny's two pamphlets, Common Sense and American Crisis, were read over 1 million Americans and is credited with instigating the Declaration of Independence. So in the same way, the seeds of revolutions in French and in India also is no exception. And as we celebrate 74th year of independence, it would behove us to remember the role of pre-independence literature in our freedom struggle. I'm not, since morning we have been hearing about it. I'll just quote few and I'll wind up my paper. Newspaper like Bande Matram, founded by Bankim Chandra Pal in 1905. Juganta Patrika, founded by Barindra Kumar Ghosh. Abhinash Bhattacharya Bhupendranath Dutt in 1906 and Harijan, founded by Gandhi in 1932, sought to make Indian citizens not only socially and politically aware, but also united them for one common cause. Pamphlets written and distributed across India provided critical information and served as propaganda against the British. However, many intellectuals of the time also consider it important to use fiction and poetry for a patriotic purpose and to create a nationalist discourse. Bankim Chatterjee was one of such author who used literature to spread the message of patriotism.
Since morning, we have heard a lot about Anand Mat, that how it was said during the famine in Bengal in 1770, and how it highlights the patriotic acts of and sacrifices made by the characters of Anand Mat, the ordinary people who left their homes and families to fight against subjection and in service of the mother. He viewed an insurgency against the British by untrained soldiers who succeeding in beating the most experienced British soldiers through sheer grit and determination while embodying a sense of patriotism. This novel was first banned, but later the ban was lifted by the government of India, but after independence. Our national song, Bande Matram, was published as a poem from this novel only, as you can say, which gives us the courage and urged our people to fight now also for a freedom against many issues which we are struggling with. In case of a fact-imitating fiction, Bande Matram served its purpose during the freedom struggle as well. Despite being banned, the general public would recite the poem or sing the song in front of British officials, and many were carted off to jail for doing so. Due to its tradition of sacrifice and its success in bringing a country together again, the British in 1937, the first two verses of Bande Matram were adopted as the national song by the Indian National Congress. In 1884, Chattopadhyay published Devi Chaudrani, which became an inspiration to women to take up the cause of independence. In this novel, he kept his belief that an armed conflict is the only way to win independence, but he made a woman the protagonist and the leader of the struggle. We can see in Anand Mat also a strong women character, but here we find that this is in majority he wanted the women to take up arms and to fight while they embody the values of love. So he could foresight to understand that without the cooperation of women, the freedom struggle could not be entirely successful. So we can say as things progressed, even Gandhiji's, when we read about Gandhiji, we see that his popularity rose because of his using literature to portray his ideals. There were other two novels also which I want to just mention. K.S. Venkataramani, who wrote two important novels, Murugan the Tiller and Kundan the Petroy. The first one was written in 1927, the second one in 1934. It dealt with the economic impact of Gandhism and the civil disobedience movement, respectively. In Murugan, Venkatramani captures the sacrifice of a village in the struggle for freedom. In Kundan, his protagonist Raghu finds himself so enamored by the Indian freedom struggle and Satyagraha that he joins the movement despite his mother's angry protest. We can see Gandhi's influence on many other writers like Mulk Raj Anand, then in his can say Untouchable, then The Village Across the Black Waters, The Sword and the Sickle, and he felt even Raja Rao's Kantapura also is revolving around the Gandhi's philosophy. So we can say that Gandhi had a very huge impact. Such portrayal of Gandhi in ideology and literature cemented Gandhi's position as a leader. We can say for those who were dealing with exploitation, Gandhi became a hero who would improve their lot and usher in a new era with a more equal society. So we can see through these novels, the protagonists of pre-independence literature were ordinary men and women who joined the freedom struggles and became heroes. They were not intellectuals or even educated.
They belonged to different caste and class, came from different parts of India and spoke different languages. However, despite their differences, they believed in the same ideology. They wanted to give up everything in the quest for a better quality of life and freedom, and with the first step being independent from Britain. As a result, pre independence literature was instrumental in uniting people to a common cause, and this horizontal translation gave us national building. We can say national building has always been linked to national integration and the creation of national identity. For a country like India, it is a very delicate and challenging matter to deal with the national identity that derives its strength from multiple layers of social, political, religious, economic, social, cultural, ethnic, and linguistic diversity. However, the communication gap, which inevitably arises out of such a diversity of boundaries, is constantly being bridged by the people themselves, whose day to day reality is, for the majority, living in a multicultural society and interacting in a multilingual manner. These novels, stories, whose nature is patently nationalistic, were made available to the Indian population through translation, without which it was inconceivable that deeply entrenched cultural and linguistic boundaries within India that that could not be bridged. Thank you. Very much. Thank you very much, Dr. Shamta Chaudhary, for your enlightening paper. Thank you. Thank you, sir. सर आपके ऑब्जर्वेशंस बताइए सर. Shamta ji is so tired. Shamta ji's paper was highly impressive, very penetrative and innovative also. ये सर नाम बोला इसलिए नहीं करता क्या Shamta? Shamta. Yes sir, ये नाम ही अपने आप में सिंपल है ना सर? सिंपल भी है, सार्थक भी है, और साथ साथ ये इनकी जो विशाल जो कल्पना शक्ति है, सोचने की शक्ति है, उसको भी दर्शाता है ये. It was really wonderful. और खास करके जो चारों स्पीकर्स थे, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर वंदना शर्मा और फाइनली प्रोफेसर क्षमता चौधरी, इन सारे पेपर्स में एक बात जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उभर करके आई वो ये थी कि सभी ने अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अनुवाद अपने आप में एक, लोग कहते हैं कि ये एक सृजनात्मक कला नहीं है. कई लोगों का ये विचार है, कई विद्वानों का, और मैंने पढ़ा भी है कि एक अपने आप में एक सृजनात्मक विधा नहीं है. अनुवाद करना तो क्या है कि किसी किताब को पढ़ो और उसको अपनी भाषा में अनुवाद कर दो या अपने ढंग से अनुवाद कर दो. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे एक कोई साहित्यकार है, वो साहित्य को रचता है, उसमें उसकी ऊर्जा लगती है, उसमें उसकी सर्जना शक्ति लगती है, उसी प्रकार से जब कोई अनुवादक किसी भी पुस्तक को अनुवाद करता है तो वो उस अनुवाद को करने में जो उसकी कला है या उसकी जो क्षमता है या उसकी जो सोच की शक्ति है, वो इतनी अधिक ऊर्जावान होती है कि वो न केवल उसको आत्मसात करता है, जो मूल लेखक है उसके भावों को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी सोच को, बल्कि उसको साथ साथ एक ऐसे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि लोग उसको समझ सके, दूसरी भाषा वाले जो उस भाषा को मूल रूप से नहीं जानते, जो उस भाषा के न्यूएंसेस को मूल रूप से नहीं जानते, उन लोगों के लिए वो उसको सरल बनाता है. और सरल बनाने की प्रक्रिया में उसे बहुत सारे रास्तों में से गुजरना पड़ता है, जिसे हम अगर हेनरी जेम्स का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, टॉर्मेंट ऑफ फॉर्म,
जो असली टॉर्मेंट ऑफ फॉर्म है, जो असली टॉर्मेंट है ना, दैट टॉर्मेंट लाइज विद द ट्रांसलेटर, because when it translates the ideas, when it translates the language from one text to another, so that it can be easily understood by those who do not know the original language, native language. So therein lies the intelligence of the translator. तो इन सब बातों को इस सेमिनार में बहुत अच्छी ढंग से, बहुत ही नए तरीके से उभारा गया है। और मैं समझता हूं कि जो प्रोफेसर अग्रवाल ने ये जो विषय चुना है, ये अपने आप में एक अनूठा है और अनोखा है, और एक ये नई सोच को जन्म देगा। और खास करके इनकी ये बात मुझे आज बहुत ही अच्छी लगी कि हमारे जो अंग्रेजी विभाग हैं उन्हें अपने आप को बदलना होगा, इस सेंस में कि हमें अंग्रेजी तो पढ़नी है लेकिन अपने ढंग से पढ़नी है, हिंदुस्तानी ढंग से पढ़नी है, भारतीय ढंग से पढ़नी है। और भारतीय जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की जो रिचनेस है, जो भारतीय भाषाओं की जो क्षमता है, उस क्षमता को उभारने के लिए हमें अंग्रेजी विभागों को निरंतर रूप से कार्य करना चाहिए, और उसके लिए एक स्पेशल सेल भी होना चाहिए। और साथ साथ में हमें जो हमारा सिलेबस है उसमें भी एक बहुत आमूल रूप से बदलाव चाहिए। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, और एक ये बहुत ही अच्छी उन्होंने बात देश में प्रारंभ की है कि हम अपनी जो लोकल चीजें हैं, जो हमारा जो लोकल साहित्य है, जो हमारी जो लोकल बातें, उनको हम ग्लोबल ढंग से, ग्लोबल स्तर पर उभारें, और हम अपनी क्षमताओं को और अधिक जो है आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि आज के जो इस सत्र में सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से सामने रखा है, और नई दिशा इस सेमिनार को इनके विचारों से मिलेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सभी स्पीकर्स को, मुख्य रूप से सर को, शर्मा साहब को, जो हमारे हमेशा पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल जी, आपको है असली सर, आपको जुड़े रहना है, कल भी जुड़ना है सर वैलिडिक्टरी में आपको। वो तो जुड़ूंगा ही। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ मिलकर के कुछ नया सोचने का अवसर मिलता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। May I now take the honor of extending a formal vote of thanks on behalf of the organizing team, Department of English, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, and Department of English and Foreign Languages, Central University of Haryana, Mahendragarh. I express a deep sense of gratitude to all our speakers for their scholarly discourse, and a heartfelt thanks to Professor S.T. Sharma sir for managing this session so well as a moderator. Once again, I thank you all. Over to Dr. Seema Sharma. Thank you. Thank you once again. We will reassemble tomorrow in this online webinar at 10 o'clock. Thank you. Until then, goodbye to everyone. The meeting is over. You can leave now. What